Yeah, we can start. Now we are recording directly on YouTube, so we can start. Okay, thank you, Rahul. Now we can start, Bayram? Yes, yes. Okay. Good morning, all of you. I, Vikas Bathwal, as Seminar Committee Chairman of IPCA, welcome you all on the pleasant Sunday morning. I also welcome the speaker, CA Surbhi Bohra, on IPCA platform. I'm very glad to inform that yesterday we had a full day seminar on bank audit, and the program was houseful, and it was held at BCCI NS Road. In physical form. In physical form. Yes. And due to the hard working of our president, Bairang Lal Agrawal, and the chairman of full day seminar, C. Rajesh Jalan. Rajesh Jalan. And all the committee. And due to the effort of IPCA team, the program was well done, and the there was a huge number of participants till end. Over 100, yeah. Over 100. Yeah, over 100 to 125 participants were there. I wish our IPCA team all the best. Now, moving to further, as we know that from 1st of April 2022, it means that E-Invoicing will be implemented for all the taxpayers whose aggregate turnover exceeding 20 crores in any of the years from 2017-18, I think. So today our speaker, CA Surbhi Bohra, will throw light on the provisions of E-Invoicing, and how he will also read out the provisions and how the E-Invoicing will be generated. And we welcome our speaker, learned speaker, CA Surbhi Bohra. In the second session, we will discuss about the live tally, that how the e-way will be generated, and also they will talk about the log and the trail of audit trail. Now I request our President CA Bairang Lal Agrawal to give opening remarks. Thank you. Over to Bairang. Thank you, Vikas. Happy Sunday morning to all my fellow chartered accountant, seniors members, our past presidents of association, ladies and gentlemen. I, Bajrang Agrawal, on behalf of VIP Road Chartered Accountant Study Circle, EIRC, welcome our speaker of the today's sessions, Surbhi Bohra, very young and energetic speakers of the today's sessions. I also welcome all the delegates who have joined today's program via virtual platform. Friends, as we know, today our topic of the seminar is E-Invoicing under GST Act. As we know, from the 1st April 2022 onwards, it is compulsory to generate E-Invoice to all the businessmen whose turnover is above 20 crore in any preceding years. And the second topic of the seminar is how to generate E-Invoice via tele. Friends, I believe all the delegates who have joined today's program must be benefit from today's sessions. With these words, I request our co-chairman of the seminar committee, CA Neeraj Kejriwal, kindly introduce our speaker of the session, CA Surbhi Bohra. Thank you. Over to the Neeraj. Neeraj, you are mute. Please unmute yourself. Thank you, Bajrang. CA Surbhi Bohra, partner of PD Rungta and Company, is the GST head of the firm. She qualified as chartered accountant in the year 2013.
She is also a faculty identified by the Institute of Chartered Accountant for GST through FIP4. She has deliberated on various forums on GST and indirect taxation and is conducted various workshops for business and non-business organizations. She is the active member of eminent professional bodies like Direct Tax Professionals Association and Central Kolkata Study Circle. Currently, she is the treasurer of CKSA Study Circle. Now I would like to request CA Surbi Bora to start her deliberation. Thank you. Thank you, Neeraj ji. A very good morning to everyone. Thank you, VIPCA Study Circle for having me and to make the discussion on the most raging topic as of now on e-invoicing. So I would request you all, I want it to be an interactive session, so I would request you all to, if you have any queries, to post it on the chat group. I will try and cover all the queries during the session. And if any queries are unanswered, I'll be taking those up at the end of the session. So in order to understand the e-invoicing provisions, it is important for us to understand the background of how did e-invoicing start. So I'll be sharing, I hope my screen is available to everyone. Yes. Yes. Just a moment, I'll just put it on the, just a moment. Yes. So basically, I'll give you the background of e-invoicing, and then I'll be taking you through what are the requirements, what is the applicability, who all are required to do e-invoicing, and so on. So to give the background, we have to understand what is the concept of e-invoicing. क्या ये कुछ सब नया है? क्या ये कुछ अभी start हुआ है? Well, ऐसा कुछ नहीं है. E-invoicing was first conceived by Chile. Chile is a country, it's in South America, and it was the first country to introduce e-invoicing provision back in 2004. So they conceptualized this entire provision of e-invoicing, and they generated their first e-invoice in January 2005. Apart from Chile, there are around 112 other countries who are generating e-invoicing and who are actually doing the entire provisions based on e-invoicing system. तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि ये इनवॉइसिंग का प्रोविजन रिक्वायर्ड क्यों. तो अगर हम लोग देखें तो जो यूरोपियन कंट्रीज है और जो अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पर मैन पावर की शॉर्टेज है. सो टू इन ऑर्डर टू जनरेट एनी काइंड ऑफ इनवॉइस, उनका जो कॉस्ट लगता है दैट इज वे टू हाई. सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट, they have with the aid of the technology, they thought how to minimize the cost, and they came out with this concept of e-invoicing. So basically होता क्या है, हम जब एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, आप कनेक्ट करिएगा कि हम जब एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, तो उसमें ट्रांजैक्शन एक बार मिस्टर ए रिकॉर्ड करता है जब उसने सेल करना है, उसके बाद मिस्टर बी रिकॉर्ड करेगा जब उसने उसको परचेज अपने बुक्स में लेना है. तो यहाँ पर 2 लेवल पे रिकॉर्डिंग हो रही है. अब ई इनवॉइस हो जाने से क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ मिस्टर ए करेंगे और मिस्टर ए के रिकॉर्डिंग को टेक्नोलॉजिकली एम्बेड मिस्टर बी कर लेंगे अपने सिस्टम में और अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में. इससे क्या होगा, टाइम विल बी रिड्यूस्ड, कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड, मैन पावर विल बी रिड्यूस्ड, प्लस the probability of errors while recording it will also be reduced. So this was the entire concept behind generating and developing the e-invoicing system. Going ahead, India में इसका legal provision क्या है? Well, in the 35th GST Council meeting held on 21st of June 2019, GST Council ने introduce किया कि e-invoicing applicable होगा through Rule 48(4). So उन्होंने notify किया through notification number 68 2019. उन्होंने कुछ और notifications issue किए थे 2019 में, जिसके थ्रू उन्होंने e-invoicing पोर्टल को notify किया, उन्होंने recognized category of person को notify किया कि किसके ऊपर e-invoicing provision applicable होगा, उन्होंने e-invoicing
के प्रोविजंस को नोटिफाई किया, प्लस उन्होंने क्यूआर कोड को सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन को नोटिफाई किया जिनके लिए क्यूआर कोड एप्लीकेबल होगा. Now we have to understand something. E-invoicing has been made applicable in a phased out manner. एक बार में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है. अभी अगर हम लोग बोले तो हम लोग फेज 4 में हैं. फर्स्ट फेज था जिसमें उन्होंने एप्लीकेबल किया फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अप टू 500 crores. Then second phase was for 100 crores. The third phase was for 50 crores and now 20 crores. So ये जो phase 4 है ये 1st April 2022 को start हो रही है. When I say that, we have to understand the, certain provisions which are relevant here. सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगी. सो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर का टर्म को समझना है. सो व्हाट इज दिस एग्रीगेट टर्नओवर? Well, aggregate turnover has to be determined as per section 2 subsection 6 of CGST Act. वहां पर डिफाइन किया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है. So basically, aggregate turnover is all the supplies. It has to include all the supplies, be it your taxable supply, your exempt supply, non-GST supply, exports, export of goods, export of services, interstate transaction between distinct person. Distinct person क्या होता है? Different GST and under same PAN. और ये जो calculation होगा, ये PAN basis पे होगा. So basically, I have to check my aggregate turnover based on the PAN number. So supposedly, I'll give you an example here. Supposedly, I have 3 branches and 3 GSTN, one in Bihar, one in Bengal, one in Odisha. अब बिहार का मेरा जो GST है ना, सपोज करिए उसका टर्नओवर मेरा 8 करोड़ है. बंगाल का जो मेरा GSTN है उसका टर्नओवर से मेरा 10 करोड़ है. एंड उड़ीसा का जो GSTN है वहां का टर्नओवर मेरा से 4 करोड़ है. तो क्या मुझे इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी? वेल यस, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी फॉर ऑल द 3 GSTN सिंस दे आर रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन. क्यों? बिकॉज आपकी टर्नओवर यहाँ पर 22 करोड़ हो जा रही है. एज सुन एज इट क्रॉसेस 20 crores, the provisions of e-invoicing will be applicable on you. Even though आपके particularly GSTN की turnover 20 crores नहीं है, however आपके PAN की turnover is more than 20 crores, it will be applicable for all the GSTN under the same PAN. So we have to understand that ये नहीं है कि मेरे GSTN पे तो applicable नहीं है, मैम मैं क्यों करूँ e-invoicing? सर आपकी जो e-invoicing की provisions है वो बहुत specifically बोलते हैं कि e-invoicing will be applicable on all the GSTN. aggregate turnover जो हम लोग को देखना है वो PAN basis पे देखना है. Going ahead, कुछ exclusions है जो मेरे aggregate turnover में नहीं आएंगे, वो हैं मेरे inward supplies relating to RCM and GST. I'll give you one more example here. Supposedly मेरी entire PAN में मैंने exempt supply और taxable supply किए हैं. So अब suppose मैंने exempt supply किए हैं for say 18 crores एंड मैंने जो टैक्सेबल सप्लाई किए हैं वो किए हैं मैंने सिर्फ 3 करोड़ के. सो क्या मुझे ई इनवॉइसिंग की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी? यस, इट विल बी. एंड व्हाई? बिकॉज इवन एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल वी आर डिटरमाइनिंग कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, because that will make the that will determine the applicability of e-invoicing on all the GSTN which are covered under the same PAN. Now there's one more myth which is going around कि जो भी taxpayers 20 crores के अंडर है उनके वो e-invoicing करनी होगी. However, government has given relaxation to certain taxpayers, certain registered persons. Who are these registered persons? Well, they are the banking companies, the financial institutions, the insurance companies, the GTAs, registered person who are providing the transportation services, registered persons who are providing multiplex services, the SEZ units, government department, and the local authority. So basically, these people are exempted
फ्रॉम द ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस, इन लोगों को ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है। ई इनवॉइसिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को करनी है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर है। हाउ टू डिटरमाइन दी 20 करोड़ दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। 20 करोड़ आपके पैन बेसिस पे होगी, हर जीएसटीएन के लिए एप्लीकेबल होगी। हाउएवर अगर आप इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एन एनबीएफसी या जीटीए हैं, तो आपके ऊपर ये ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। गोइंग अहेड, अनदर मिथ विच इज देयर कि ई इनवॉइसिंग हर एक ट्रांजैक्शन के लिए करने होंगे और हर एक डॉक्यूमेंट के लिए करने होंगे। वेल, दैट इज नॉट द केस। आपको किन डॉक्यूमेंट्स के लिए इनवॉइसिंग करनी है और किन ट्रांजैक्शंस के लिए इनवॉइसिंग करनी है, वो मैं आपको भी डिस्कस करती हूँ। वेल, ई इनवॉइसिंग आपकी सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस के लिए करने हैं। आपकी SEZ के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहे, वेदर इट इज विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट, उनके लिए करने हैं। फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट, उसके लिए करने हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 147, notified under the relevant notification, उसके लिए करने हैं। And for RCM, what do I mean by RCM? These are the RCM which are my outward supplies. Other than GTA services, any other outward supplies which are covered under notification number 13/2017 CTR are required to have e-invoicing. E-invoicing मुझे किन डॉक्यूमेंट्स पे करने हैं? ई इनवॉइसिंग मुझे इनवॉइसेस पे करने हैं, मुझे क्रेडिट नोट्स पे करने हैं एंड डेबिट नोट्स पे करने हैं। तो मैं जब यहाँ पर क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स बोलती हूँ, ये वो क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स हैं जो कि सेक्शन 34 के अंडर मुझे इशू करने हैं। सो अगर मेरे कोई फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स हैं, उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गुड्स इशू की, गुड्स किसी को सप्लाई किया, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई किया फॉर 1 लाख रुपीज और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाई। सो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाता, मेरा इंटायर इनवॉइस वैल्यू हो जाता 1,18,000। अब ड्यू टू एनी प्रायर अग्रीमेंट कोई रिविजन हो रहा है प्राइस में, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिसके लिए मुझे जीएसटी का इम्पैक्ट देना होगा अंडर सेक्शन 34, तो मुझे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट देना इशू करना होगा। उस क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के अगेंस्ट भी मुझे ई इनवॉइसिंग करनी होगी। सो बेसिकली, हाउएवर, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स। ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स क्या होते हैं मैडम? वेल, ये जो क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इशू करते हैं फॉर आवर बुक्स एडजस्टमेंट, या फिर हम लोग कोई डिस्काउंट देते हैं हमारे कोई वेंडर को कोई स्कीम के तहत जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं है सेल के टाइम पे, या कोई हम स्पेसिफिक तरह की डिस्काउंट या देना चाहते हैं, उन क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स जिसमें जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उस क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के लिए हमें इनवॉइसिंग नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर दी अदर ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर मेरी ई इनवॉइसिंग नहीं होगी? ई इनवॉइसिंग मेरी B2C ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटरी नहीं है। व्हाट आर दी B2C ट्रांजैक्शंस? Well, B2C transactions are the cash sales that you are making directly to the consumers, जिसकी GST नंबर नहीं है। So these are the B2C transactions जिसके ऊपर e-invoicing provision applicable नहीं होंगी। There was a panic in the market कि since e-invoicing is there, ये तो मुझे how will it be possible for me? मेरे अगर कोई शॉप में आया, वो अगर आके से supposedly एक स्टेशनरी शॉप ही है, वो स्टेशनरी शॉप में आया, उसने बोली कि मुझे आप पर्टिकुलर ये स्टेशनरीज दे दीजिए, और मेरे पास ना कंज्यूमर का कोई डिटेल है, आया, उसने बाय किया और ले गया, तो क्या उसके ऊपर इनवॉइसिंग होगी? वेल, उसके ऊपर नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी। B2C इनवॉइसिंग के ऊपर आपकी ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, what are the other documents जिसके ऊपर other transactions जिसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है? One of them is delivery चालान। So delivery चालान हम लोग कब इशू करते हैं? Delivery चालान इशू करने के लिए there are certain transactions जब हम लोग delivery चालान और certain events जब हम लोग delivery चालान इशू करते हैं। One of them is sale on approval। So supposedly मुझे sale on approval के लिए goods को रिमूव करना है मेरे premises से,
तो मुझे डिलीवरी चलान इशू करना होता है। उस समय मैं इनवॉइस इशू नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे सर्टेन नहीं रहता है कि मेरे कितने गुड्स सेल होने हैं, तो मुझे ये नहीं पता होता है कि मुझे कितने की इनवॉइसिंग करनी है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट इशू एन इनवॉइस, आई इशू अ डिलीवरी चलान. So when I'm making a sale on approval, I'm issuing a delivery challan. At that point of time, मैं e-invoicing नहीं करूंगी, बट मैं e-waybill जनरेट करूंगी क्योंकि मुझे गुड्स की मूवमेंट करनी है. सो यहाँ पर मुझे एक और चीज समझ में आती है कि e-invoicing की प्रोविजन अलग है और e-waybill की प्रोविजन अलग है. E-waybill is required for movement of goods and e-invoicing is required for issuance of when we have to validate an invoice. What is e-invoicing? How to do it? I'll be discussing that at a later stage. But right now, I'm just concentrating on what are the transactions and the documents which are covered under e-invoicing. Apart from that, मेरे अगर कोई goods मुझे job work में भेजने हैं, again I use delivery challan. Again, I don't have to generate e-invoicing for that. If I have to do intra-state stock transfer between distinct person, माने मेरे एक ब्रांच से supposedly कोलकाता में है और एक मेरी ब्रांच हुगली में है और दोनों सेम जीएसटीएन में रजिस्टर्ड है, मुझे ई इनवॉइसिंग करनी है? नहीं करनी है, बिकॉज मुझे इनवॉइसिंग नहीं करनी है. मुझे डिलीवरी चलान के थ्रू गुड्स एक प्रेमाइसेस से दूसरे प्रेमाइसेस में भेजने हैं एंड देयरफॉर मुझे ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है. सो इन केसेस में मुझे ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. सपोजिटली मुझे गुड्स मेरे जॉब वर्कर के यहाँ पर भेजना है, तभी भी मुझे ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब इसके अलावा मैं अगर एग्जेम्प्ट सेल करती हूँ या नॉन जीएसटी सेल करती हूँ या निल रेटेड सेल करती हूँ, तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट इशू करने होते हैं? मुझे उस समय टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना होता है, मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है. इसीलिए बिल ऑफ उस ट्रांजैक्शंस पे, माने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पे, निल रेटेड सप्लाईज पे, जो जिस केसेस में मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है, उन डॉक्यूमेंट्स पे भी ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है. इसके अलावा मैंने जस्ट अभी बोला था कि आरसीएम के ऊपर ई इनवॉइसिंग होगी. सो ये कौन से आरसीएम है? ये वो आरसीएम ट्रांजैक्शंस है जो कि मैंने रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू किए हैं, उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग होगी. हाउएवर दोज आरसीएम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेड थ्रू नॉन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जहां पर मुझे सेल्फ इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आती है, वहां पर मुझे ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी. सो बेसिकली e-invoicing is required for all the registered person covered under B2B transactions, supply to SEZ units, exports, deemed exports, RCM. किन documents पे लगेंगे? Invoices, debit notes and credit notes covered under section 34. किन किन transactions पे नहीं लगेंगे? B2C supply, exempted supply, जॉब वर्क के पास अगर मैं गुड्स जॉब वर्क के लिए गुड्स भेज रही हूँ डिलीवरी चलान पे, अगर मैं इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर कर रही हूँ अंडर सेम जीएसटीआईएन, अगर मैं सेल ऑन अप्रूवल कर रही हूँ तब नहीं रिक्वायर्ड है. एंड ऑन सेल्फ इनवॉइसिंग आरसीएम इन ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर सेल्फ इनवॉइसिंग. वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि जो आपकी सेल ऑन अप्रूवल होगी, डिलीवरी चलान जब आप इशू कर रहे हैं तब ई इनवॉइसिंग नहीं होगी, बट जब सेल अप्रूव हो जाता है, मुझे इनवॉइस इशू करना है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ई इनवॉइसिंग करनी होगी. सो देयर माइट बी अ डिफरेंस इन टाइमलाइन ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइसिंग एंड e-waybill, but there cannot be timeline difference between e-invoicing and invoicing. And this was a very important thing that we need to understand. अब ई इनवॉइसिंग मुझे किसके थ्रू करनी है? ई इनवॉइसिंग के लिए मुझे क्या करना है? ई इनवॉइसिंग के एक जो सबसे बड़ा मिथ अभी आ रहा है कि मैडम मुझे ई इनवॉइसिंग करना है माने मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे छोड़ देना है, मुझे मेरे सॉफ्टवेयर पे बिल्स जनरेट नहीं करनी है. Well, that is not the case. You have to use the software that you are using. You will be continuously using the software that you have been using. आप टैली यूज कर रहे हो, ERP यूज कर रहे हो, SAP यूज कर रहे हो या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, या आप मुनिम जी यूज कर रहे हो जहाँ पर हम लोग हाथ से बिल्स बनाते हैं, भले हम लोग वही कर रहे हो, मुझे इनवॉइसिंग उसी मैनर में करनी है. देयर इज नो चेंज एज टू whether my invoicing has to be made through the government portal. I don't have to do my invoicing through the government portal.
I have to make the invoices the way I was doing it, as in my accounting software, on my ERP, on the tally, through handwritten invoices, whatever way I was doing it, I will continue doing it. खाली एक addition यहाँ पर क्या हो गया है? After I issue the invoice, I have to get it validated on the IRP portal. What is the IRP portal? IRP portal basically कुछ पोर्टल्स है गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं. ये पोर्टल्स पे आपको जाके अपने इनवॉइस के डिटेल्स अपलोड करने हैं और आपको IRN जनरेट करना है. IRN जनरेट करने का क्या मतलब है? एक 64 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसको IRN बोलते हैं. वो IRN आपको जनरेट करने हैं. उसके साथ एक QR कोड जनरेट होगा. उस QR कोड, am I audible? ओके, सो ये जो QR कोड और IRN जनरेट होगा, ये E-Invoicing पोर्टल से होगा. मैडम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. वेल, हम लोग एज अ प्रोफेशन ये अभी ऑलरेडी कर रहे हैं. ये हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग सब UDIN जनरेट कर रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स. वेल, वी आर डूइंग दैट. इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम UDIN. UDIN हमें C इंस्टीट्यूट बोलता है जनरेट करने. लाइकवाइज अब हमें गवर्नमेंट बोल रहा है आप IRN जनरेट करिए और अपने इनवॉइस को वैलिडेट करिए. जैसे हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उस समय हम लोग को UDIN जनरेट करना होता है फॉर वैलिडेटिंग दी सर्टिफिकेट दैट वी आर इशूइंग. तो उस समय क्या होता है, हम लोग UDIN पोर्टल में लॉग इन करते हैं. UDIN पोर्टल में जाके जो सर्टिफिकेट है या ऑडिट रिपोर्ट है उसके डिटेल्स हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, जो कि मैंडेटरी फील्ड में दिए हुए हैं. और उसके बाद ऑटो जनरेट ऑन रियल टाइम बेसिस UDIN जनरेट होता है और वो UDIN को हम अपने सर्टिफिकेट या ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफाई करते हैं. लाइकवाइज सिमिलर मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर E-Invoicing. हम लोग इनवॉइस इशू करेंगे, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में करेंगे. उसे हम E-Invoicing पोर्टल या IRP पोर्टल उस पे जाएंगे, लॉग इन करेंगे. जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, देयर आर डिफरेंट मोड्स जिसके थ्रू आप E-Invoicing कर सकते हैं, दैट आई विल बी डिस्कसिंग. हम लोग जाएंगे, वहाँ डिटेल्स भरेंगे. whatever the mandatory fields are required, I'll be discussing that as well. वो सब डिटेल्स भरेंगे. एक IRN ऑन रियल टाइम बेसिस जनरेट होगा, जो कि 64 कैरेक्टर का होगा, जो कि अल्फा न्यूमेरिक होगा. उसे हम अपने इनवॉइस में एम्बेड करेंगे. QR कोड जो जनरेट हुआ है उसे हम एम्बेड करेंगे और हम अपने इनवॉइस को सप्लायर, अपने जो भी रिसिपिएंट है उसको इशू कर देंगे. नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि ये जो QR कोड है ये क्या होता है. वेल, QR कोड हम लोग वी आर वेरी मच known to this requirement of QR code. QR code is a quick response code. वो बेसिकली एक एनकोडेड पैटर्न रहता है जिसमें आपके इनवॉइस के डिटेल्स एम्बेडेड हैं. So basically you can scan the QR code and you can find out the details about your invoices. So it is mandatory for all to incorporate the QR code and IRN code to your invoices. मैडम, जब हम लोग E-Invoicing में भरेंगे तो मुझे क्या मैंडेटरी फील्ड्स हैं? वेल, मैंडेटरी फील्ड्स आर वेरी बेसिक इनवॉइस डिटेल्स. लाइक द बेसिक इनवॉइस डिटेल्स माने हो गए आपके इनवॉइस नंबर, आपकी इनवॉइस डेट, सप्लायर इंफॉर्मेशन. सप्लायर इंफॉर्मेशन में आपके सप्लायर का नाम, सप्लायर का GSTIN, सप्लायर का एड्रेस आ जाता है. बायर इंफॉर्मेशन माने जो आपके रिसिपिएंट है उसका डिटेल्स आएगा, उसका GSTIN, उसका नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट द डिलीवरी इंफॉर्मेशन माने whether I'm delivering it to the buyer itself, to the recipient itself, or am I shipping it elsewhere. तो वो डिलीवरी इंफॉर्मेशन वहां पर जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस द बैच डिटेल्स माने किस बैच में ये पर्टिकुलर गुड्स को बनाया है, वो बैच डिटेल्स चले जाएंगे. मेरे जो इनवॉइस या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का टोटल है वो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेरे आइटम के डिटेल्स है, what do I mean by item details? Well, item details means the description of the goods or the service. And apart from that, what is the HSN or the SEC code? So for example, मैं अगर टैली से कर रही हूँ या मेरे ERP से कर रही हूँ, यहाँ जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है
वो ये आता है कि मेरे टैली में मैंने HSN कोड डाला है 4501/4502। ये जो स्लैश है ये कहीं पर भी HSN के फॉर्मेट में नहीं है। मुझे मेरे सिस्टम को अपडेट करना होगा, आइटम के डिटेल्स को उसी तरह से डालना होगा जो स्पेसिफाइड है लॉ में। So it cannot be the short form of the HSN code. It cannot be with a slash, dash, comma, point. It cannot be that. It has to be in the actual format that has been specified in the setup. Apart from that, item के मेरे taxable value का details जाएगा, मेरी जो tax के amount है उसका details जाएगा. Like we are very accustomed to all this already. Are we generating E-way bill? We are generating E-way bill. E-way bill में भी यही सारे, अगर हम देखें, यही सारे fields जो हैं वो mandatory हैं. यही सारे fields E-invoicing के लिए भी mandatory हैं. जैसे हम E-way bill generate करते हैं उसी तरह से हमें E-invoicing के लिए यही सारे details को, यही सारे मेरे जो fields हैं ये मेरे लिए mandatory और यही सारे fields को मुझे specify करना है. Apart from that, there are certain non-mandatory fields which are provided, which are optional. It is not necessary for everyone to put in the details. These are the delivery period or the invoice period. अगर मेरा कोई preceding IRN है, माने invoice reference number है, कोई और reference है, कोई और details मैं डालना चाहती हूँ, pay information डालना चाहती हूँ, ship to details डालना चाहती हूँ, प्री-टैक्स डिटेल्स डालना चाहती हूँ, ई-वे बिल डिटेल्स डालना चाहती हूँ, कोई और रेफरेंसिंग नंबर, कोई सिग्नेचर, ये सारे ऑप्शनल फील्ड्स हैं. दीज आर ऑन योर डिस्क्रिप्शन वेदर यू वांट टू पुट दीज डिटेल्स यू कैन डू इट. इफ यू डोंट वांट टू पुट दीज डिटेल्स यू कैन डू इट. सो मेरा आफ्टर जनरेटिंग द IRN एंड द QR कोड, दिस इज हाउ माय इनवॉइस विल लुक लाइक. वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि मैं QR कोड को कहाँ प्लेस करूँ और IRN को कहाँ प्लेस करूँ. वेल, the law has not prescribed any specific format or has not prescribed any specific place where you have to place it in your invoice. आप इसको कहीं पर भी place कर सकते हैं as per your discretion and your choice. You want to place it on top of your invoice, you can do it. You want to place it in the bottom of your invoice, you can do it. You want to put it in the right alignment, you can do it. Left alignment, center alignment, it's totally on your discretion wherever you want to embed it. But it is required कि आप ये IRN एंड QR कोड को इनकॉर्पोरेट जरूर करें. क्या मुझे ये इनवॉइस को प्रिंट करना होगा और वो जो मुझे एज रूल 48 में स्पेसिफाइड है, रूल 48(1)(2)(3) में कि मुझे ट्रांसपोर्टर कॉपी बनानी होगी, मुझे बायर्स कॉपी बनानी होगी, डू हैव टू डू दैट? नो, वी डोंट हैव टू डू दैट. यू हैव टू you can just give the printout of the e-invoice that you have made and that will suffice. They can scan the QR code and get the details of the invoice. It is not specified to, it is not required कि आप e-invoicing करें और उसको आप ट्रांसपोर्टर कॉपी अलग से दें और बायर्स कॉपी वहां पर जो मेंशन करनी होती है वो आप अलग से मेंशन करें. That is not required at all. However, you have to give the printout, you have to send the bills to your suppliers. Now, one important thing what I would like to discuss here is e-invoicing करना क्यों है? Why is government asking us to do it? What is the purpose of doing it? So, well, this is one of the biggest steps that government is taking towards automation of all the returns. अगर हम अभी currently देखेंगे तो मेरी जो GST returns है ये partially automated है. Partially automated कैसे है? सप्लायर GSTR1 भरता है. सप्लायर के GSTR1 के बेसिस पे GSTR2B या 2A जनरेट होते हैं जिसमें इनपुट डिटेल्स आ जाते हैं. सो सपोजिडली मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, उन्होंने GSTR1 में अपने सेल डिटेल्स डाला. जैसे ही उन्होंने सेल डिटेल्स डाला मेरे GSTR2A और 2B में रियल टाइम में वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है. As soon as it gets auto populated and we know now the restriction is there on the ITC, जितना मेरा 2B में उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं अवेल कर सकती हूँ. सो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे डालना ही नहीं. It has been fixed, it is automated. Whatever is reflected in 2B is my input tax credit. I cannot take input tax credit beyond that. So that is already partially automated. What government is trying to do now कि ये जो आपके सप्लाई के डिटेल्स है वो भी ऑटोमेट करना चाहते हैं. ध्यान से सुनिएगा वो कैसे होगा.
I have to generate my invoice. I have to generate my invoice, validate it through IRP portal. IRP portal is nothing but a bridge between your ERP system and the GSTN. आपकी जो भी इनवॉइसेस आप IRP पोर्टल पे डालेंगे, वो IRP पोर्टल पे सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहेंगी और वो रियल टाइम बेसिस पे जीएसटी पोर्टल पे चली जाएंगी और GSTR1 में रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल रहेंगे. सो बेसिकली जैसे ही मैंने मेरे इनवॉइस जनरेट की, ई-इनवॉइसिंग की, मेरी GSTR1 रेडी हो जा रही है. B2B डिटेल्स आर अपलोडेड ऑलरेडी by the IRP portal on my GSTR1. So that is the thing that government is looking forward to automate. GSTR1, GSTR2. आपको करना क्या है, आपका GSTR1 रेडी हो जाएगा ई-इनवॉइसिंग से, GSTR2 भी आपके पास अवेलेबल आपके सप्लाई के डिटेल्स से, सप्लायर के डिटेल्स से. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you just have to create a challan, accept the outward liability, accept these input tax credit, B2C details अगर कुछ है तो आप incorporate करिए. उसके अलावा अगर आपकी RCM की कुछ credits आप उसको incorporate करिए and you file your GSTR 3B return and you are done for the month. So this is towards the automation. This is a big step towards the automation of the returns, what the government is trying to do. So how is it going to help me? Well, it is going to help me in backward integration. Since it is going to happen on a common portal, schema same है, mandatory fields same है. मुझे अगर मैं अपने invoice, अगर मैं अपने जो ERP system है उसको मैं link कर देती हूँ इस particular system से, तो क्या मुझे input की details डालनी पड़ेगी मेरे ERP system में? I can automate that as well. So यहाँ पर क्या होगा? What will be the benefit? Well, the benefit will be that manpower save. There will be reduction in errors. There will be reduction in timeline, and obviously there will be possibility कि मुझे उतना time involve नहीं करना पड़ रहा. What is the due to digitalization? What is happening nowadays? We are trying to give up all the mechanical tasks that we were doing earlier. पहले हम वाउचिंग करते थे, एक वाउचिंग करने में, उसके बाद ड्राफ्टिंग करने में, फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगता था. नाउ इट कैन बी डन ऑन क्लिक of the application. There are so many softwares doing it. It is just because of the automation and digitalization. Likewise, this is a huge step towards automation and for making the return systems automated, so that one taxpayer doesn't have to give much time for filing of GSTR1 and 2 or 3B returns. So it is auto-generated. आपको सिर्फ चालान क्रिएट करना है, पेमेंट करना है, and you are done with your return filing. So this is the process that the government is adopting. Likewise, adopting, and this is why e-invoicing has been brought into place. There is a lot of negativity around the concept कि e-invoicing आ जाएगा तो मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना ट्रांजैक्शंस किस तरह से मॉडिफाई करूंगी. This is one of the important things. अगर मेरी कोई मिस्टेक रह गई है, देन मैं अपने इनवॉइस में, मैं इनवॉइस जनरेट करते समय मैंने इनवॉइस में कुछ डिटेल्स डाले थे जो रिक्वायर्ड नहीं थे. हाउ डू आई, इनवॉइस जनरेट हो गया, हाउ डू आई चेंज दैट? वेल, आपके पास 24 आवर्स है, आप उसे अमेंड कर सकते हैं. अगर आपको कैंसिल करना है, आप अपने इनवॉइस को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट विद इन 24 आवर्स. आफ्टर दैट द IRP पोर्टल डिलीट्स द डेटा. वो उतना बड़ा ह्यूज डेटाबेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो आपके GST पोर्टल पे उसे ट्रांसमिट कर देते हैं. तो वो दैट डिटेल्स दैट रिगार्डिंग योर इनवॉइसेस आर ट्रांसमिटेड टू योर GST पोर्टल. आफ्टर 24 hours you can check it there. However, you've got 24 hours to amend the details and to cancel the details. मैम, क्या मैं पार्शियल कैंसिलेशन कर सकता हूँ? Well, partial cancellation are not available. Partial cancellation cannot be done. So what is to be done now? You have to cancel the entire invoice. 24 hours lapse हो गए मैम, मैं क्या करूं? Well, 24 hours lapse हो गए, आपके पास दो ऑप्शन है. नंबर 1, आप GSTR1 में उसको चेंज कर दीजिए. That amendment is required because GSTR1 आपके रियल टाइम पे प्रिपेयर हो रहा है, बट सबमिट तो आप नेक्स्ट मंथ के 11 तक करेंगे. तो आपको अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, आप GSTR1 में जाके उसको अमेंड कर दीजिए. बट देयर विल बी वन प्रॉब्लम हियर.
the changes will be flagged off to your officers कि उन्हें पता चल जाएगा आपका जो ई इनवॉइसिंग का डिटेल्स है और आपके जो इनवॉइस का डिटेल्स है वो चेंज हो गया है. सो द प्रॉब्लम इज दैट जो आपकी ई इनवॉइस में का डिटेल्स गया है और जो आप GSTR1 में डाल रहे हैं वो डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली देयर माइट बी, it might give a good reason to the officer to make you justify what is the reason for doing that. Apart from that, someone just asked कि कितनी देर में IRN जनरेट होगा. इट इज ऑन रियल टाइम बेसिस. एक क्लिक पे आपका IRN जनरेट होता है. इट इज सो फास्ट, इट इज लाइटनिंग फास्ट. आपको वेट नहीं करना होगा. इट इज जस्ट ऑन क्लिक कि आपका IRN जनरेट होता है. जिस तरह से आपका UDIN जनरेट होता है उसी तरह से आपका IRN जनरेट होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं और क्या कर सकती हूँ कि मेरा IRN का वैल्यू भी सेम रहे, मेरा ई इनवॉइस का वैल्यू भी सेम रहे और मेरे इनवॉइस या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का भी वैल्यू सेम रहे. वेल आई कैन मॉडिफाई और चेंज और कैंसिल माई इनवॉइस थ्रू क्रेडिट नोट्स और द डेबिट नोट्स. एज आई सेड, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स के लिए भी आपको ई इनवॉइसिंग करनी है तो वो ई इनवॉइसिंग की डेटाबेस में चली जाएगी एंड लाइकवाइज ऑफिसर के पास वो डिटेल्स चली जाएंगी and they will not ask for the reason for the amendment or the changes of the invoices. All of them will be at par. Your invoices, your credit notes, debit notes, any adjustments, and your e-invoicing will be at par. Now, what are the issues that are going to happen if I how do I cancel these e-invoices? So basically, आपको login करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है, IRN डिटेल्स देके अपने आपको सिलेक्ट करना है कौन सी ई इनवॉइस या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को आपको कैंसिल करना है. वो उसको आप वहां जाके सबमिट करिए और कैंसिल कर दीजिए. ऑल दिस हैपेंस ऑन रियल टाइम बेसिस. सो व्हाट आर द मोड्स? जो अभी एक क्वेश्चन आया कि मैं किस तरह से ई इनवॉइसिंग कर सकता हूँ. वेल आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट राइट नाउ. ई इनवॉइसिंग आप किस तरह से कर सकते हैं? ई इनवॉइसिंग करने के डिफरेंट मोड्स हैं. एक है आप मैनुअली इसे डायरेक्टली IRP पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं. लॉग इन टू योर IRP पोर्टल. दे विल टेक, देयर इज एन ऑप्शन टू जनरेट ई इनवॉइस. उधर आपका जो मैंडेटरी डिटेल्स जो मैंने बताए थे, मैंडेटरी फील्ड्स वो आते हैं. आपको वो अपने इनवॉइस के थ्रू फिलअप करने हैं. जो मैंडेटरी डिटेल्स यू हैव टू फिल अप दोस डिटेल्स है. द सप्लायर बायर इंफॉर्मेशन, द इनवॉइस डिटेल्स, the values, the description of the item, all these you have to put in there, and then you have to click generate IRN. The IRN is generated on real time basis. ये IRN और QR कोड जो generate होंगे उसको आप embed कर लेंगे अपने invoices में. This is one of the ways which is again dependent on manpower. Apart from this, there are the, अगर मुझे bulk में generation करें, मेरे बहुत सारे invoices है मैडम, मेरे बहुत सारे इनवॉइस जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द डे. हाउ डू आई डू दैट? वेल you have the facility of offline utility which is available. आप अपने एक्सेल फाइल में बनाइए, वो CSV को ऑफलाइन यूटिलिटी में अपलोड करिए. JSON फाइल जनरेट होगा, JSON फाइल को आप अपलोड करिए, उसके अगेंस्ट में IRN जनरेट हो जाएगा. अगेन थ्रू दैट यूटिलिटी आप उसे अपने इनवॉइसेस में इनकॉर्पोरेट कर लें. इट कैन बी जनरेटेड थ्रू मोबाइल ऐप एंड SMS ऑल्सो. अगेन अगर ये 4 यूटिलिटी या 4 मोड हम यूज करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस. व्हाट इज दैट? मेरा मैन पावर और मैनुअल इंटरवेंशन है यहाँ पर. जहां पर मेरा मैनुअल इंटरवेंशन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? वेल, मैनुअल इंटरवेंशन होते ही द प्रॉब्लम विल बी दैट देयर आर हाई चांसेस ऑफ एरर्स, ओमिशन. सो दैट इज वन इशू. हो सकता है मैंने 100 इनवॉइसेस जनरेट किए बट मैंने 99 इनवॉइस की इनवॉइसिंग की है. तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, वो आएगा रिकंसिलिएशन का. तो अभी तक तो मैं इनपुट को रिकंसाइल कर रही थी, अब मुझे आउटपुट को भी रिकंसाइल करना होगा. सो दैट इज समथिंग विच विल बी अ चैलेंजिंग इशू इफ वी आर यूजिंग ईदर ऑफ दीज 4 मोड्स. हाउ डू आई ऑटोमेट इट? मैडम मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं चाहिए, मुझे किसी भी तरह से कोई भी इनवॉइस का ई इनवॉइसिंग ना हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहिए. हाउ डू आई डू दैट? आप इसे ऑटोमेट कर लीजिए. हाउ डू आई ऑटोमेट इट? जस्ट ऑल यू नीड टू डू इज, आप जो भी ERP यूज कर रहे हैं, SAP यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या टैली यूज कर रहे हैं, देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ API इंटीग्रेशन. सो बेसिकली API इंटीग्रेशन क्या होगा?
आपका जो भी सॉफ्टवेयर है और जो गवर्नमेंट पोर्टल है, इन दोनों के बीच में एक एपीआई इंटीग्रेशन होगा, एक ब्रिज होगा, जिसके थ्रू आपके सॉफ्टवेयर से गवर्नमेंट पोर्टल पे ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस ट्रांसमिट हो जाएंगी और आईआरएन जनरेट होके ऑटोमेटिकली आपके ईआरपी में आ जाएंगे और आपके इनवॉइसेस में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. So this can be done through API integration. There are a lot of companies which are giving API integrations. There are a lot of GSPs through which you can do this API integrations. You can do API integration by yourself also, directly also. But for taking the client ID for direct API integration, आपका turnover 500 crores के ऊपर होना चाहिए. For the small taxpayers, आप कोई GSP के थ्रू कर लीजिए. आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलिए, whoever is taking care of your software, they can do this through the API integration. API integration से क्या होगा? API integration से एक बटन आ जाएगा आपके ERP में, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके टैली में, जिसको क्लिक करते के साथ ही रियल टाइम बेसिस पे आपका IRN जनरेट होके वो आपके इनवॉइस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. आपका QR कोड वहां इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है. It reduces the chances of any kind of errors, mistakes, omission, or any kind of manual error that could have been. For example, invoice मैंने बनाई है 1 लाख रुपीस की, but E-Invoicing पोर्टल पे मैंने डाल दी 1,01,000 की, तो there will be a mismatch. So if this is possible if I'm doing it manually, however it is not possible if I've automated my system likewise. ऑटोमेशन करना बहुत इजी है. ऑटोमेशन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है. प्लीज टॉक कनेक्ट टू योर the person who is taking care of your software or the ERP or the or Tally. It is very much available. As we know, Tally के लिए available है. आज discussion भी आपकी Tally के ऊपर. How is it going to be available? How can you do it? So please do listen to that session because it will be of very much of use for you, because it will just happen on the click कि आपका सारा काम हो जा रहा है. You don't have to do anything else for it. Like e-waybill होती, जिस तरह से e-waybill होती है Tally के थ्रू, उस तरह से आपके पास ऑप्शन है E-Invoicing के. Apart from this, they also have a facility कि आप अपने E-Invoice जनरेट करते हैं, उसी समय आप e-waybill भी जनरेट कर लीजिए. आपको e-waybill जनरेट करने के लिए, hello, am I audible? Yes, you are audible, ma'am. Yeah. So the thing is, as soon as आप अपना E-Invoice जनरेट करते हैं, ऑटोमेटिकली E-Invoice पोर्टल से e-waybill पोर्टल पे आपके डिटेल्स चले जाएंगे और आपका e-waybill ऑटो जनरेट हो जाएगा. उसके लिए भी आपको डिटेल्स फीड इन नहीं करनी पड़ेंगी. These facilities are very much available. Please connect to the person who is providing you the software, who is doing your software, who is taking care of your software, can actually help you doing this. API इंटीग्रेशन होती है. बहुत सारी GST सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, ASPs हैं, GSPs हैं, जो ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है. आपके सिस्टम को इंटीग्रेट करवाती है, API इंटीग्रेशन करवाती है और अपने सिस्टम को अपग्रेड करवाती है. जो स्कीमा रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. एंड इट इज अ मैटर ऑफ से मैक्सिमम 1 डे और 2 डेज कि आपका ERP अपडेट हो जाएगा, आपके टेबल्स अपडेट हो जाएंगे, एंड यू कैन डू दिस E-Invoicing एंड e-waybill फ्रॉम योर सिस्टम डायरेक्टली. मैडम, मैं अगर मैनुअली बिल्स मेंटेन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैनुअली आप कर रहे हैं, मैनुअली ऑप्शन अवेलेबल है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू टेक केयर कि आप अपना रिकंसिलिएशन रेगुलरली करवा रहे हैं, आप अपना GSTR 1 रिकंसाइल कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि आपकी E-Invoicing हुई है कि नहीं हुई है. दिस ब्रिंग्स मी टू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैडम, मेरा IRN जनरेट नहीं हुआ, मैंने इनवॉइस बनाया, माल भेजना था, अर्जेंट था, e-waybill बनाया, गुड्स मैंने भेज दिया, रास्ता में पकड़ लिया गया मेरा गुड्स, अब मैं क्या करूं? Well, that will be a difficult position you will be in because your invoice will be treated as invalid. अगर आपके इनवॉइस में IRN नंबर नहीं है, QR कोड नहीं है, आपकी इनवॉइस इनवैलिड मानी जाएगी. आप माना जाएगा कि आपने इनवॉइस के बिना ही गुड्स को सेंड किया है. इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर सेंडिंग द गुड्स. आप डिलीवरी चलान पे भेज रहे हैं, आप भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिलीवरी चलान, e-waybill आर गुड इनफ. बट अगर आप इनवॉइस के कवर में भेज रहे हैं, इनवॉइस के साथ गुड्स भेज रहे हैं, प्लीज
टेक केयर कि आपका ई इनवॉइसिंग हुआ है। आप कहाँ ट्रबल में आएंगे? मैडम मेरा गुड्स भी पहुंच गया, पुलिस ने नहीं पकड़ा, जीएसटीआर अब मैं क्या करूं? मेरे जीएसटीआर 1 में तो डिटेल्स नहीं गई है, मेरे जीएसटीआर 1 में सिर्फ वो इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट हुए हैं जो जिसकी इनवॉइसिंग हुई है। सपोजिटली मैंने मंथ में 100 इनवॉइसेस बनाए हैं, आउट ऑफ दैट 88 हैव बीन अपलोडेड, 12 इनवॉइसेस का मैंने इनवॉइसिंग नहीं किया। मैडम अब मैं क्या करूं? मेरे ऊपर क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी? मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी? वेल, पेनल्टी का प्रोविजन है सेक्शन 125 में। हाउएवर देयर इज अ रेमेडी टू दिस आल्सो। देयर इज अ रेमेडी गिवन इन सेक्शन 126 जहां पर बहुत स्पेसिफिकली बोला गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसीड्यूरल लैप्सेस पेनल्टी शेल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द टैक्स पेयर। आप अभी आईआरएन जनरेट कर लीजिए, कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं दिया गया है कि आपको आईआरएन कब जनरेट करना है। इट इज प्रेफरेबल जिस दिन का आपका इनवॉइस हो उसी दिन का आपका ई इनवॉइसिंग होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपकी इनवॉइस की डेट और आपकी ई इनवॉइस की डेट अलग हो जाएगी। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको जो ऑफिसर है वो थोड़ा हैरेस करे, वो बोले कि आई विल नॉट ट्रीट इट एज अ वैलिड इनवॉइस। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ई इनवॉइसिंग की डेट और ई इनवॉइस की डेट सेम रखें। अगर नहीं रखते पेनल्टी वो नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज अ प्रोसीड्यूरल लैप्स, नथिंग मोर। बट जनरेट कर लीजिए, ये मत सोचिए कि मैं जनरेट ही नहीं करूंगा। प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज डू जनरेट द आईआरएन, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे हम यूडीआईएन जनरेट करते हैं, बिना यूडीआईएन के मेरा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, वैसे ही बिना आईआरएन के मेरी इनवॉइस वैलिड नहीं रहेगी। हाउ डू आई डू इट? वेल, दिस इज द IRP पोर्टल। आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू सो दैट यू गेट फैमिलियर टू इट। इस तरह से आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। आप अपना API इंटीग्रेशन भी यहाँ से करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले सकते हैं फॉर API रजिस्ट्रेशन। जीएसटी जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी API का लाइसेंसिंग रहता है, जिसके थ्रू आप उनकी लाइसेंसिंग परचेज कर सकते हैं और आप अपनी ERP और अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। टैली के पास भी टैली भी एक GSP है और उसके पास API इंटीग्रेशन है, इसलिए टैली में वो ऑटोमेटाइजेशन हो जाता है। जो टैली का डिस्कशन आज होगा आपको वो यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा। क्या हेल्प आपको मिलती है अगर ई इनवॉइसिंग करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपकी ऑर्गेनाइज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी इनवॉइसिंग प्रोसेस के थ्रू। जो ये बैकडेटेड एंट्रीज होती थी, जो बैकडेटेड एंट्रीज होती हैं, ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। व्हाट विल बी द हाउ विल इट हेल्प मी? आपको पता है अभी ऑडिट ट्रेल वाला प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होने वाला है, सो इट इज गोइंग टू हेल्प अस देयर आल्सो। अगर ई इनवॉइसिंग हो जाती है तो मैं कोई भी इनवॉइस को चेंज नहीं कर सकती हूँ या मॉडिफाई नहीं कर सकती हूँ बैकडेटेड पे, मेरी ऑडिट ट्रेल वहां बच जाएगी। इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दिस हैबिट ऑफ चेंजिंग द इनवॉइसेस, कैंसलिंग द इनवॉइसेस, दिस विल डू अवे विद। और अगर आप कैंसिल भी कर रहे हैं या चेंज भी कर रहे हैं, यू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर इट। ओके, मेरा जो मैन पावर है, मैन आवर्स है, रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज मुझे अब एक एक अपलोड नहीं करना पड़ेगा, मुझे वापस से जेसन फाइल अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ई इनवॉइसिंग के थ्रू मेरे B2B इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे, मेरे एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे, SEZ के इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे। ऑल आई हैव टू अपलोड इज द HSN डिटेल्स एंड द B2C ट्रांजैक्शंस। इससे मेरा मैन पावर का यूजेज जो है रिटर्न फाइलिंग में वो भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा। मेरा जो reconciliation है, that is one important thing which is required to be done. If you are not doing it through automated process, please do take care that you are reconciling the data that has been auto generated in GSTR1 before filing it. There might be a possibility कि आपके books में जितने invoices generate हुए हैं हो सकता है if you are doing it manually कहीं कुछ error रह गया हो, there might be a possibility of manual error on या आपके इनवॉइस छूट गए हो या वैल्यूज कहीं पर कुछ गलत चले गए हो। प्लीज डू रिकंसाइल बिफोर फाइलिंग द GSTR1 डेटा। अपार्ट फॉर दैट आप रियल टाइम बेसिस पे इनवॉइसेस को ट्रैक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज मिस्टर A ने मिस्टर B को कोई सेल किया है,
Mr. B will be able to see the invoice on real time basis because वो उनके GSTR2 भी में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, GSTR2 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे. जैसे ही उनके पास सॉफ्ट कॉपी जाएगी वैसे ही they will be able to see it on their GSTR2A portal. They will be able to track those suppliers who are not doing the compliances properly. They can stop the payments and actually ask them to be more compliant, and उनकी ITC वहाँ पर ब्लॉक नहीं होगी, उनकी ITC की मूवमेंट फास्टर हो जाएगी. So basically आपके सप्लायर अगर E-invoicing में आते हैं so it is a good thing for the recipients as well because उनको ट्रैकिंग करना easier हो जाएगा. On real time basis they can say कि सर आपने अपलोड नहीं किया है, आप प्लीज अपलोड करें. As soon as they upload it, it will be reflected in your 2A. As soon as you issue an invoice, it will be reflected in your 2A. There will be no requirement for filing GSTR1. But GSTR1 आपको टाइमली फाइल करना है, बट आपको वेट नहीं करना है कि GSTR1 फाइलिंग होगा 11th को तब मेरा डेटा अपलोड होगा. आपका डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस अपलोड होते जा रहा है. आप चेक करते जा रहे हैं कि कौन से सप्लायर्स आपके जो सप्लायर्स आपकी इनवॉइसिंग में वो ऑलरेडी आपके पास GSTR1 में अवेलेबल रहेंगे. खाली आपको ट्रैक करना होगा उन सप्लायर्स को जो आपके इनवॉइसिंग प्रोविजंस में कवर नहीं हो रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने जो ह्यूमन एरर्स है उसको रिड्यूस कर पाएंगे. आपका डेटा की इंटीग्रिटी बढ़ जाएगी. Apart from this, these are some of the benefits which business will get. The faster availability of input tax credit, as I discussed, lesser possibility of audit and survey. क्यों? क्योंकि जो मेरा ERP है वही मेरे GSTR1 में जा रहा है. मेरी ऑडिट की पॉसिबिलिटी, रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी विल रिड्यूस. रियल टाइम ट्रैकिंग रहेगा. एक बार मेरी E-invoice क्रिएट हो गई है तो it will help me in interoperability. What is this word interoperability? Well, interoperability का मतलब है जो डिजिटलाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट एक एडवांटेज हमें मिलता है कि एक बार मेरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से मेरी रिटर्न ऑटोमेटिकली भरी जा रही है. मेरे जो परचेजर है, रिसिपिएंट है, उनके पास मेरी डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जा रही है. सो आई डोंट द पर्सन हु इज filing the return doesn't have to put it again. The person who is receiving the goods or service doesn't have to record it again. It is all available on real time basis, and there is a minimization of errors also. Again, जो reconciliation का differences बहुत huge हुआ करता था वो reduce हो जाएगा. E-way bill auto populate हो जाएगी. एक efficient मेरी administration, tax administration बन जाएगी. गवर्नमेंट को किस तरह से हेल्प होगा? गवर्नमेंट को फास्टर प्रोसेसिंग में हेल्प होगा. अभी तक उन्हें अपने ऑफिसर को इन्वॉल्व करना पड़ता था रिकंसिलिएशन में. अभी तक उनको वाउचिंग करवाना पड़ता था अपने ऑफिसर से. इनको कुछ नहीं करना होगा. एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड. दिस मैकेनिकल प्रोसेस विल बी रिड्यूस्ड फॉर द गवर्नमेंट एज वेल. द गवर्नमेंट विल बी एबल टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फास्टर. आपका जो ऑडिट प्रोसेस है, असेसमेंट प्रोसेस है, दैट विल बिकम फास्टर. So it is going to help all of us. It is going to save us a lot of time, a lot of manpower. We can use this manpower for more beneficial purpose, for more brainstorming work, for more important works rather than mechanical work. अब एक जो important चीज है, मैडम मैं E-invoicing के लिए मेरे ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं वो मैं कैसे चेक करूं? आप अपने GST पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हैं. IRP पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं. वहां पर एक ऑटो इनेबल ऑप्शन आ जाएगा अगर आपके ऊपर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर रिपोर्टेड है GST पोर्टल पे. हाउएवर अगर रिपोर्टेड नहीं है आप अपने आप को इनेबल कर सकते हैं. यू कैन वेरी मच बिकॉज अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर रिटर्न्स फाइल नहीं हुआ है स्टिल यू हैव टू इनेबल इट सो दैट आपका 1 अप्रैल से E-invoicing एप्लीकेबल हो जाए. और आपका GSTR1 फाइल करने का ड्यू डेट इज 11th of April. तो उस टाइम गैप के कारण आप अपने आप को इनेबल कर सकते हैं. वंस यू आर इनेबल्ड यू कैन गेट योर सेल्स रजिस्टर्ड. आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा जिसको यूज करके आप E-invoicing कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ टू रिक्वेस्ट E-enabling which I have already told. रजिस्ट्रेशन में जाके आप E-enabling प्रोसेस कर सकते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर मैं E-invoicing नहीं करती हूँ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? Well, there are a lot of consequences, which is one of that I have already discussed.
when you are sending the goods, अगर रास्ता में माल पकड़ा गया, if your goods are caught by the officers, that time your invoice will be treated as invalid invoice, and he has got the right to detain the goods and to seize the goods. So be very careful if e-invoicing is applicable. मैडम उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं है? सर उनके पास भी रियल टाइम में डेटा अवेलेबल है, वो भी IRP पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं है. अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपने ई इनवॉइसिंग नहीं की है, आपके गुड्स डिटेन हो सकते हैं, आपके गुड्स को सीज किए जा सकते हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल देयर. उसके ऊपर आप अगर नॉन इशुएंस करते हैं, नॉन जनरेशन, अगर हम ई इनवॉइस इशू नहीं करते, मेरा इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाता है. इनवॉइस अगर वैलिड नहीं है तो माना जाएगा कि मैंने गुड्स को बिना इनवॉइसिंग किए भेजे हैं. बिना इनवॉइसिंग के अगर मैं गुड्स भेजती हूँ तो उसके ऊपर 100% पेनल्टी का प्रोविजन है, या 10,000 whichever is higher. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अपने अगर मैं बोल देती हूँ कि मैं IRN जनरेट करना भूल गई, बट यहाँ पर एक चीज समझना होगा, ऑफिसर के नॉलेज के पहले मुझे IRN जनरेट कर लेना है. अगर मैं IRN जनरेट कर लेती हूँ, मैंने अपने इनवॉइस को करेक्ट कर लिया है, there is a possibility of charging 25,000, but again there is a remedy available to me under section 126, जिसमें प्रोविजन में बोला गया है कि आप प्रोविजन पेनल्टीज तब तक यूज नहीं कर सकते हैं अगर कोई प्रोसीड्यूरल लैप्स है. We can say this is a procedural lapse. There was nothing intentional. I've already paid the tax. Since there is no dues of the taxes, and just because of the procedural lapse, you cannot impose penalty on me. Apart from that, मेरे को प्रॉब्लम आएगी ट्रांसपोर्टेशन में. रिसिपिएंट के लिए सबसे ह्यूज प्रॉब्लम हो जाएगी. रिसिपिएंट की इनवॉइस वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट available नहीं होगी. If e-invoicing is applicable on the supplier, supplier does not generate does not do the e-invoicing, IRN generate नहीं करते हैं, तो आपकी जो recipient है उसे वो क्रेडिट नहीं मिलेगी, उसकी इनवॉइस को इनवैलिड मान लिया जाएगा. रिसिपिएंट को प्रॉब्लम होगा, रिसिपिएंट विल बी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्रॉप हो जाएगा. So we as recipient also have to be careful whom are we dealing with. If e-invoicing is applicable on our suppliers, we have to make sure that they are generating e-invoicing. We should not accept the goods or services if the e-invoicing is not being done. We have to ask them goods. देखिए services के cases में it is more easier, but goods के cases में it is on real time basis. आपका e-waybill generate होता है, invoicing generate होता है, real time basis पे होता है. आप प्लीज अपने सप्लायर्स को परस्यू करें कि वो ई-इनवॉइसिंग करें, IRN जनरेट करें, ताकि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉब्लम में ना आए. Apart from this was the basic discussion that I wanted to make. Apart from this, there are certain FAQs which are important that I would like to discuss. One of it is there any time limit within which one has to report the IRN? It has to be on real time basis. कोई mistake रह गई, कुछ error आ गया, that's another thing. However, if the IRN is required to be generated, it should be done on real time basis. जिस date पे आपकी invoice issue हुई है, उसी date पे आप IRN generate करिए. I told you the process. It can be done on click of a button. अगर आप ऑटोमेट नहीं करते हैं तो मैनुअली करिए, बट उसी डेट पे करिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, कैन अ बिजनेस प्लेस अ लोगो ऑन ई-इनवॉइस टेम्पलेट? ई-इनवॉइस टेम्पलेट में लोगो प्लेस करने का कहीं ऑप्शन नहीं है. आप अपने इनवॉइस पे लगाइए. इनवॉइस में आप IRN लगाएंगे, आप अपने QR कोड लगाएंगे, बट ई-इनवॉइस टेम्पलेट में आप कहीं पर भी लोगो नहीं लगा सकते, वहां पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. हाउ कैन वन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ ई-इनवॉइस? वेल, जो QR कोड है आप उसको स्कैन कर सकते हैं. QR कोड को स्कैन करने से आपकी इनवॉइस की डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी, उसका IRN भी वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा. दैट विल हेल्प यू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ई-इनवॉइस. प्लस आप अपनी ई-इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी IRP पोर्टल से भी कर सकते हैं. IRN नंबर को आप अगर IRP पोर्टल पे डालते हैं तो वो उस वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, वो वहां पर आ जाता है. अगर वो करेक्ट होगा तो आपके इनवॉइस की डिटेल्स आ जाएंगी, अगर वो इनकरेक्ट होगा तो इनवॉइस की डिटेल्स नहीं आएंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, किन के लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू.
अभी एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि B2B सप्लाई में क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? वेल, B2B सप्लाई सर्विसेज में भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, बी इट गुड्स और बी इट सर्विसेज। B2B ट्रांजैक्शन है, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। B2B ट्रांजैक्शन होते ही आपका ई इनवॉइसिंग का एप्लीकेबिलिटी आ जाता है। डजंट मैटर आपका गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं कि सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। लाइकवाइज आप SEZ यूनिट्स को अगर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केसेस में भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। सो प्लीज बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि खाली मैं गुड्स के सप्लाई पे इनवॉइसिंग कर रही हूँ और सर्विस पे नहीं कर रही हूँ। मुझे सर्विस पे भी करना है, गुड्स पे भी करना है, B2B ट्रांजैक्शन पे करना है, एक्सपोर्ट्स पे करना है। SEZ यूनिट को अगर मैं कुछ सप्लाई करती हूँ तो उस पे भी करना है। सो बेसिकली समिंग अप माय सॉफ्ट कॉपी ऑफ इनवॉइस विद द ड्राइवर और ओके और हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड। हार्ड कॉपी दे दीजिए, इट इज रिक्वायर्ड। हार्ड कॉपी में QR कोड रहेगा, उसको स्कैन करके जो ऑफिसर है वो आपके इनवॉइस की डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एक हार्ड कॉपी जरूर ही अपने ट्रांसपोर्टर और अपने रिसिपिएंट को प्रोवाइड करें। How will the recipient know that e-invoicing is applicable on the supplier? आपके GST नंबर से वो आपके टर्नओवर को चेक कर सकते हैं। GST पोर्टल पे, IRP पोर्टल पे वो चेक कर सकते हैं whether e-invoicing is applicable to you or not. आप अपने आपके सप्लायर का आप GST नंबर डालिए। आपके पास टर्नओवर का डिटेल्स GST पोर्टल से भी अवेलेबल है, IRP पोर्टल पे वेदर उनका e-invoicing इनेबल्ड है कि नहीं है वो चीज अवेलेबल है। एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूंगी वो है फाइनेंशियल ईयर्स को लेके। मेरी एग्रीगेट टर्नओवर किस फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ होनी चाहिए? वेल, वो 2017-18 से लेके 21-22 तक अगर कोई भी एक पीरियड में आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो इनवॉइसिंग प्रोविजंस आपके ऊपर 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैडम, अगर मेरी एक साल में थी और उसके बाद मेरी टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस नहीं हुई है तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। मैडम, मेरा टर्नओवर करंट ईयर में मैंने 22-23 में क्रॉस नहीं कर रहा है, क्या मुझे इनवॉइसिंग करनी है? आपको इनवॉइसिंग करनी है। एक बार आपके ऊपर ये इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो वो आपको थ्रू आउट करनी है। व्हाट इफ मेरी टर्नओवर अभी तक 20 करोड़ क्रॉस नहीं हुई है, 22-23 में ड्यूरिंग द ईयर मेरी अगर टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस हो जाती है, सो व्हाट? आपको उस समय नहीं करनी है। Your e-invoicing provisions will be applicable to you from next financial year, that is 23-24. It will not be applicable to you even if your turnover crosses 20 crores during the financial year. It has to be seen financial year wise. I hope I have covered almost all the queries. In case अगर कोई query रह जाती है तो आप please मेरे से पूछ सकते हैं. I'll be readily available to address those queries. From where can we check turnover? From 17 to 18. आप सप्लायर का GSTN चेक कर सकते हैं GST पोर्टल पे। GST पोर्टल में टर्नओवर डिटेल्स अवेलेबल रहती है। या आप बहुत सारी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं अभी, दे आर डूइंग दिस डेटा माइनिंग, they are getting this form signed from the suppliers taking a declaration whether e-invoice is applicable to them or not. उनका turnover details क्या था 17-18 से लेके अभी तक. You can also do the same thing. You can ask your suppliers कि आपका टर्नओवर डिटेल्स जो था वो आप मुझे प्रोवाइड करिए. आप उनका बैलेंस शीट का कॉपी मांग लीजिए. आप उनके बैलेंस शीट का कॉपी MCA से डाउनलोड कर सकते हैं अगर वो कंपनी LLP है. So that is readily available there. आप ITR का कॉपी मांग सकते हैं. So these are the some places from where you can get the turnover details. If the client has not generated the IRN for December 21-22, can he generate it now? Well, the client has not generated, he can generate it now, but he'll be answerable to the officer. Ma'am, transport details e-invoice में देना होगा. It is not mandatory. It can be done later on. क्योंकि कितने बार वो दूसरा लोग को वो करना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा पंकज का. क्योंकि कितने बार होता है कि हम गुड्स का इनवॉइस क्रिएट कर लिए बट ट्रांसपोर्टेशन से एक हफ्ता बाद हो रहा है या एक महीना बाद हो रहा है.
So transportation details are not mandatory. E-waybill is not required to be generated on the same day. It can be generated later on. Your transport details are not mandatory. It can be put in detail later on. It can be incorporated in your invoices later on. It is not a mandatory field for generation of e-invoicing. Another question is e-invoicing mandatory for B2B supplies for exempt service also. Exempt services, exempt good supply of goods, exempt supply of service के लिए e-invoicing required नहीं है. उस केस में हम invoice generate नहीं करते हैं. उस केस में हम B2 उस केस में हम लोग bill of supply issue करते हैं. बिल ऑफ सप्लाई के केस में हमें इनवॉइसिंग नहीं करनी है. हमें इनवॉइसिंग सिर्फ इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स के लिए करनी है. Whether rental income of GTA is subject to e-invoicing or not. सर GTA रेंटल इनकम नहीं देता है. GTA कंसाइनमेंट नोट देता है. GTA ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है. Rental income is provided by hiring service of car and motor vehicle. तो अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंडर कवर्ड है तो एप्लीकेबल नहीं है. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर रेंट पे आप गाड़ी नहीं ले रहे हैं, आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले रहे हैं, ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आएगी. Why recipient need to know that invoicing is applicable on his supplier? Well, it is important for the recipient to know ताकि वो ये ट्रैक कर सके कि सप्लायर ने ई इनवॉइसिंग की है कि नहीं. अगर सप्लायर ई इनवॉइसिंग नहीं करेगा तो रेसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा. In how many days we can had generate an e-invoice from actual invoice? Is it 3 days grace period or else? There is no grace period. आपको प्रेफरेबली सेम डे करना चाहिए. इन केस मिस्टेक हो जाता है आप कभी भी उसे कर सकते हैं. अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं डाली है गवर्नमेंट ने. It is anticipated once phase 4 is completed, they will be coming up with a provision of limiting the time limit for generating the e-invoice as well. Rental income from renting or leasing or warehousing of GTA. Rental income अगर है उसके ऊपर आपको इनवॉइसिंग करनी है. खाली GTA की जो प्योर GTA की सर्विस है उसके ऊपर आपको इनवॉइसिंग नहीं करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर आउटवर्ड लाइबिलिटी, आउटवर्ड सप्लाई आपको इनवॉइसिंग करनी है. रेंटल हो, लीजिंग ऑफ वेयर हाउसिंग हो, आपको इनवॉइसिंग करनी है. प्योर GTA सर्विसेज exempted. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दी सर्विसेज आर कवर्ड अंडर इनवॉइसिंग. मैडम एक मेरा क्वेश्चन था. जी श्योरली. जैसे वो इनवॉइस सेलर अपलोड करता है, इज देयर एनी सिस्टम थ्रू API so that I can download the file and import in my computer so that purchase entry can be made in my system automatically? It totally depends on the ERP you are using. It can be done. अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप बात करिए, अगर वो सेम टेबल को वहां पर ऑटो पॉपुलेट कर लें और ई इनवॉइसिंग से कनेक्ट कर दे. आपको ई इनवॉइसिंग से कनेक्ट नहीं करना होगा, आपको GST पोर्टल से कनेक्ट करवाना पड़ेगा. बट GST पोर्टल पे अभी वो API डेटा अवेलेबल नहीं है. However, there are a lot of softwares which provide these schema which can be embedded to your ERP system. क्योंकि बड़ी कंपनीज में अगर ये सिस्टम हो जाए तो परचेस कैन ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड नो मैनुअल इंटरवेंशन. बड़ी सर मैं बताती हूँ बड़ी कंपनियां क्या करती हैं. वो जो स्कैन करती है ना, जैसे आपका गुड्स एंटर करता है, वो स्कैन करते ही वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में एंट्री हो जाती है. अच्छा, QR कोड को स्कैन करने से हो जाएगा? जी, ऑटोमेटिकली हो जाती है. सो वो सिस्टम अवेलेबल है. तो आपका सप्लायर का बिल आया, आप QR कोड स्कैन करिए और आपके बुक्स में एंट्री हो जाएंगे. ये वाली पॉसिबिलिटी सबके लिए अवेलेबल है. मैंने जी, आप अपने ERP में इसको इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं. वो तो मेल में भी अगर आ जाता है मैडम तो अपने स्कैन करके परचेस को एंट्री कर सकते हैं. एकदम QR कोड होने से आप उसको एंट्रीज को अपना इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं. ओके, थैंक यू. Any more question in the house? Yeah, there is a question. What sort of safeguards can be taken by recipient if tax invoice is not in e-invoice and payment has been made in full? आप उनके jurisdictional officer को complain कर सकते हैं, but it is not of much use. It is better you don't make the payment before you receive the goods or the service incomplete, and e-invoicing लेने के बाद ही आप payment करो. If party has both exempt and taxable goods, then e-invoicing is applicable for taxable goods only or applicable for both. E-invoicing is applicable on tax invoices. It is not applicable on bill of supply.
आप जब टैक्सेबल सप्लाई करेंगे आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, जब आप एग्जाम सप्लाई करेंगे आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, जब आप टैक्सेबल सप्लाई करेंगे टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस के लिए आप इनवॉइसिंग करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई के लिए आप इनवॉइसिंग नहीं करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, एक और चीज का जो ध्यान रखना होगा, ई इनवॉइसिंग सिस्टम सिर्फ 1000 लाइन आइटम्स तक प्रोसेस कर सकती है। बोलने का मतलब है सपोजिटली मैं एक इनवॉइस में मोर देन 1000 लाइन आइटम्स सप्लाई कर रही हूँ, से गुड्स या सर्विस में सप्लाई कर रही हूँ एंड मेरा एक इनवॉइस में मोर देन 1000 लाइन आइटम्स हो जा रहा है, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि ई इनवॉइस पोर्टल सिर्फ 1000 लाइन आइटम्स तक ही सपोर्ट करती है, इसलिए आई हैव टू कीप माय इनवॉइस ओनली अप टू 1000 लाइन आइटम्स. For the balance line items, I should generate another separate invoice so that e-invoice it is possible for it is compatible with the e-invoice system. Madam, one more question. Yeah, please. Whether the same serial number can be issued for taxable supply and bill, tax invoice and bill of supply? No, it cannot be. Both of them are separate documents. Both of them have to have separate serial numbers. बिल ऑफ सप्लाई हर डॉक्यूमेंट का अलग सीरियल नंबर सीरीज होता है, हर डॉक्यूमेंट का अलग सीरियल नंबर हम लोग को अडैप्ट करना पड़ेगा, ये तो रूल 46 में ऑलरेडी मेंशन्ड है. एक्चुअली वन ऑफ माय क्लाइंट हैज एन इशू, एक्चुअली एग्जाम सप्लाई था, उन्होंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया फॉर द प्रीवियस मंथ, फॉर द मंथ ऑफ फेब, तो व्हाट इज द रेमेडी? द रेमेडी इज क्रेडिट नोट इशू करेंगे, वो इनवॉइस को कैंसिल करेंगे, एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे और उस एग्जाम सप्लाई को शो करेंगे. बिल ऑफ सप्लाई तो प्रीवियस मंथ का था, जीएसटीआर 1 अपलोड हो गया है, अभी नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं 11 तक, आप नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक कर सकते हैं, अपलोड कर रहे हैं ना, अपलोड कर आप कर सकते हैं सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं. हाँ वो तो हाँ ओके ओके. एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम द हाउस? E-invoicing is applicable with turnover whether IRP provides any safeguard or control. HSN is below 6 digits. No, IRP portal has to do nothing with HSN code being below 6 digits. It is nothing to do. The IRP portal has nothing has no control over the HSN code. E-invoicing needed for nil rated. No, e-invoicing is not required for nil rated. Nil rated non-GST supply or exempted supplies are not covered under e-invoicing provisions. ये इसके लिए हमें बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है, बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर e-invoicing एप्लीकेबल नहीं है. Exports are covered, export of goods, export of service, they are covered under e-invoicing. Can we do e-invoicing voluntarily if we haven't? No, you cannot, because आप enable ही नहीं कर पाएंगे IRP पोर्टल पे. IRP पोर्टल आपको e-invoicing तभी enable करने देगा अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस किया हुआ है इन एनी फाइनेंशियल ईयर. जब आप enable करते हैं तो आपका टर्नओवर पूछता है और कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या टर्नओवर था वो डिटेल्स आपसे पूछता है. इसीलिए अगर आपका 20 करोड़ क्रॉस नहीं किया है आप वॉलंटरीली e-invoicing नहीं कर पाएंगे. आपको वेट करना पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर देते. वो तो जल्दी ला देगा मैम, लगता है जल्दी लाएगा, 10 करोड़ ला देगा. वी आर एंटिसिपेटिंग कि बाय ईयर एंड तक वो 5 करोड़ तक ला देंगे. Can I do one transaction tomorrow as my GST will be applicable from 1st April? You can do any transaction. Can I do one transaction tomorrow? You can do a transaction as and when you want. आपके बुक्स में है, आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसको रिकॉर्ड करना होगा, 22-23 में आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे. E-invoicing, yeah, e-invoicing will be applicable from 1st April 2022 on taxpayers having turnover more than 20 crores. If goods return related to previous year, goods to issue e-invoicing credit note in current year. Goods return, अच्छा previous year का goods return current year में, previous years में आपने goods sell किया और current year में goods return हो रहा है, credit note आप issue करेंगे, e-invoicing करना होगा.
Whether we have to generate e-invoice for security service received under RCM. Yes, you have to. You don't have to, your supplier will. If GTA issues invoice for transportation and also for taxable supply, then can they have same serial number for both the types of invoices? They cannot have. They can have it, but जो फिर उनको e-invoicing करना होगा, ऐसा कहीं पर रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ में कि आपको अलग अलग इनवॉइसेस बनाने होंगे आरसीएम सर्विस के लिए और नॉन आरसीएम सर्विस के लिए, बट इट इज प्रेफरेबल कि आरसीएम के लिए वो अलग बनाए बिकॉज डेटा एक बार में अपलोड होता है. तो जब हम GSTR1 फाइल करते हैं तो हमको आरसीएम सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर आरसीएम सर्विसेज. तो अगर वो टैक्सेबल जो फॉरवर्ड चार्ज में कवर्ड है वो भी उसमें करेंगे तो चीज पॉसिबल नहीं होगा. इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि वो अलग अलग इनवॉइसेस बनाएं. मैनुअली तो वो बना सकते हैं, बट अगर आप ऑटोमेशन का बात करें तो वो नहीं कर सकते. I think there is no more question, madam. Thank you for your nice deliberation. Now I request our secretary, CA Rahul Unta, to offer a vote of thanks to CA Surbi Bohra. Over to Rahul. Thank you, Vikash bhaiya. Good afternoon, everyone. On behalf of the study circle and on behalf of everyone present here, Surbi, I would like to extend our gratitude and please accept our thank you for taking time out on a Sunday morning and sharing your knowledge with us. It is quite riveting listening to young professionals like yourself speaking with such confidence and with such clarity. I'm sure e-invoicing, like you have said, is going to be applicable for a lot of our clients in coming days. And most of the sessions would be required to clarify or to iron out any issues that we may face in our day-to-day profession. So, ma'am, thank you once again for your wonderful deliberation and your time. And yeah, thank you. When we look forward to more such sessions from you in coming days. Thank you. Thank you for having me here. Yeah, It was lovely speaking. Yeah, I will request you to kindly send me the PPT so that I can circulate it. Surely, surely. I'll just send it to you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Now, in the second session, I would like to request Pankaj Kabra, the proprietor of Balaji Invoices, and along with his Tally expert team, who will share their knowledge, and they will live present how to generate e-invoices, and also they will show that how audit trail will be done and how e-tokens shall be introduced in the invoices and all. Over to Pankaj Kabra. Thank you, Vikasji. Very warm good afternoon to all the veteran CAs. I hope all are safe and doing good. What a great Sunday this we're having, a great session with the CAs. Happy, and it's a privilege to share the platform with all the CAs. Myself, Pankaj Kabra from Balaji Invoices. We are into basically computer AMC networking sales and service. We are here to represent Tally, being a certified partner for Tally. You all CAs know what the e-invoice is basically and what a session taken by Surbhi. So we will take you further to this session, like how Tally can help you with implementation and how it can make your life easy. To demonstrate all this with myself, we have members from my team, Mr. Kishan Kabra, Mr. Rajeshwar Mukherjee, Mr. Sujoy Mandal. What are the things that we will take you in the next 60 minutes will definitely make your life very smooth with respect to your day-to-day maintenance of Tally and operation with Tally. The topics that we will be covering is e-invoice, audit trail, DSC, and Amazon Web Services, Tally on AWS. So just to elaborate further on this, I would request my colleague Sujoy Mandal to share his screen. Sujoyda, can you please share your screen? Surely.
So yes, as I told you that we will be taking you further how these things are happening in Tally, what are the new updates Tally is giving you, what benefits Tally is giving you with the latest release. I'll now hand over to Sujoy Mandal to take you further in this. Yes, Pankaj, please confirm if my screen is visible to all of you. Screen is visible to everyone? Yes, yes. It is visible. Right. Just give me 2 minutes. I need to set some other files also. Yeah, sure. By the time Sujata gets ready, let me tell you one thing. We are, if you have any queries, by the time, keep using the chat box, and at the last, we will definitely have that Q&A section. So please take notes and don't forget to take your questions further. We have an ample team to serve you. I believe if you have any live demonstration, we can also give you on that also. So let Sujata get ready. Very good morning, everyone. So I think today we're going to talk with 4 topics, right? And I think this 60 minutes will add value. Yes, yes. Tally, right? So, so what is new in Tally Prime? So what is a new release? That is release 2.1, right? This is a new release, and this new release is giving you 3 important features and capabilities, right? So what is today's agenda? So today we'll be talking on e-invoicing, how Tally Prime 2.1 is managing the complete e-invoicing system. Then we'll talk about the audit trail or edit log, and we'll see how Tally Prime is handling audit trail and edit log and how it will serve your purpose. Then we'll be talking about digital signature DSC, and at last we'll be talking about Tally Prime on AWS, right? Basically, Tally is Tally is facilitating the entire project, this AWS project, right? So we'll talk in details in our next stream. So this is the journey of compliances, right? VAT, we have introduced VAT in the year of 2005. Then in 2017, we have introduced GST. Then invoicing, we have introduced in the year of 2021. And this year, from 1st April 2022, we'll be giving audit trail for all of our customers, right? Those are under MCA, pursuing under MC Act. Now, walking the compliance journey with you is a complete compliance journey. It's Tally Prime. Now, e-invoicing, electronic invoicing, the present and the future of invoicing. This is e-invoicing. Now, basically, I am not going to the these laws and acts and all, because I think you all are practicing chartered accounting. That domain is, I don't need to again talk about the domain. We are already, you are handling invoicing system for your clients. So basically, we'll see how invoicing will serve the purpose through Tally Prime. That firstly, we need to understand the what sort of documents need to be reported for invoicing system and types of transactions. So all B2B and B2G tax invoices will be falling under invoicing system.
all export invoices, all reverse charge invoices, outward supply for the reverse charge items or services, right? And sales return and purchase return, right? So these are the documents to be reported for invoicing system and how Tally Prime is handling. Because we are having experience of managing invoicing systems. Because at first, when 100 crore introduced, we have launched invoicing facility for our customers, then 50 crores, and from 1st April, we'll be serving our customers. Those are falling under 20 crores threshold limit, right? Now, before going to the product, we just wanted to see how Tally Prime is playing their role. Because here we are playing the role of a GST Suvidha provider, right? Here there are suppliers, there are invoice registration portal IRP, there is a GST system, and there is a buyer. So buyer to seller, that complete chain will be covered through this system. So how it is working? Suppose there is a supplier. Supplier is generating an invoice using his ERP or Tally Prime, and through GSP, it is sending to IRP portal, right? What is happening then? So IRP portal deduplicate the check, right, and send back the return as digitally signed JSON to supplier with the QR code information, right? So JSON, so you will be getting the IRA number generated by the system and the QR code. Next, it sends the authenticated payload to the GST system automatically. Then it sends to UA bill system and generate UA bill number. So you don't need to provide data in different systems for generating your UA bill. Only you need to generate an invoice and send it to the IRP portal. Everything will happen automatically through GSP. And here Tally is a GSP. Next, what is happening at a GST system? Invoice information gets stored in GST invoice registry. Then GST system now has a unique invoice with a unique number, right? And GSTR 1 of seller gets updated, GSTR 1, as well as GSTR 2A and 2B, which is buyer is getting and buyer's ledger is getting updated. What you are doing, only you are generating an invoice, right? And at last, buyers can use the QR code to verify the invoice, and buyer can use the ITC related to the invoice in the GSTR 2A and 2B. This is the complete system. Do I need to explain the system again? So here, supplier is generating an invoice, right? Then it is sending to the IRP portal through GSP. Here Tally is playing the role of GSP, right? And it is checking all the deduplicate things, then send authenticated payload to the GST system. Then it is sends UA bill system, generate the UA bill number along with the QR code, right? Then what is happening in GST system? Invoice information gets stored in GST invoice registry, and GST system now has a unique invoice number with a unique number, and GSTR 1 of seller gets updated automatically. You don't need to update manually, right? And as well as GSTR 2A and 2B also getting updated at buyer's end. And what is the benefit of buyer? Buyers can use the QR code to verify the invoice, right? And buyer can use the ITC related documents to the invoice in his GSTR 2A and 2B. The complete scenario, all the scenarios are getting updated from supplier's end. What supplier is doing? Supplier is generating an invoice. That's it. Now we'll experience the functions, right? Now you need to integrate a system to remain on top of your compliance. Now what you need to do? So it is very simple. The Tally Prime, it is very simple, powerful, integrated system to generate e-invoices without disrupting the business process. So how it is happening, we'll see.
So this is a common screen. I hope all of you are using Tally Prime. So you need to enable the E-Invoice application. From where? From F11 features, right? You need to go to F11 features. You need to enable the E-Invoicing applicable. Yes. And applicable date is 1st April 2022 for 20 crores customers. Then save it. After that things will happen. How it will happen, that I have already explained through GSP. There is a Tally Prime and there is a IRP portal. In between, GSP is doing everything for your customers. Now we'll understand how E-Invoice will be generated from Tally Prime, right? So here I'm selecting a ledger. I'm providing all the information regarding my customer. Then I'll select the item. I'll select the godown. I'll provide quantity, rate, then amount will be coming, right? Then I need to select the sales ledger. This is very common. Then I need to select the GST ledgers. So Tally will be asking you, whether do you want to generate E-Invoice? I said, yes, I wanted to generate E-Invoice. So here you can see, provide E-Invoice details before saving the voucher. So Prime will ask you, whether do you want to generate invoice from this invoice? I said, yes, I want to generate an invoice, E-Invoice. Then say yes, then you provide the credential of your IRN portal. Now, here one thing I just wanted to say. You don't need to switch from Tally Prime to IRN portal. That credential of IRP portal, you have to provide here in Tally Prime, right? You provide your GST number, username, and password. You don't need to switch from Tally Prime to any other application. Everything you need to provide here in Tally Prime. And once you are providing your credential for the next 6 hours, Tally Prime will not ask these credential details. All right. Suppose if you are providing credentials at 10 o'clock, right, till 4 p.m., Tally Prime will never ask for these credentials, right? So I'm going ahead. I'm providing my username. I am providing my password, right? After that, I will be connecting to the IRP portal, and here within seconds, the status will be updated, and Tally Prime will inform you, will notify you that E-Invoice generated successfully. The details are updated in the transaction. Now we'll see where it is getting updated. Now you need to take the preview or you can take the print. Now this is my E-Invoice. Here, that QR code has been generated from IRP portal, the unique QR code and IRN number. So this QR code, your buyer can scan and get the information, complete information of it, right? So this is one by one you can generate. Now, one by one you can generate the invoice. So just I need the feedback from your end. Is it simple? Is it robust? So it is very simple. The way you are generating your invoice in your existing system, the same way you will generate your self, you book the self transaction, and before that you need to enable the invoice capability from F11 features, and everything will happen automatically. Obviously,
your registration must be completed in IRP portal. That you need to complete first, right? And there you need to select Tally as a authentic GST. Then everything will happen smoothly. Now, this is very flexible to generate individual or bulk invoices to IRP portal. So I can generate invoice in two ways: single invoice by invoice, or at the end of the day, I can generate bulk invoices. Maybe at the end of the day, you'll be generating invoices for E-invoices for all the invoices you have captured at the day end, right? So how it will work, the bulk invoices, that we see now. How the bulk upload will happen. This is also very simple. You can access report from go to menu. Then you will see the list of transactions. This is the transaction history for a particular date, right? So total here I have got 2 invoices got rejected by the invoice system. This is the dashboard, complete dashboard. I can see, I can get the information for all the sales transactions. Pending, how many invoices are pending for the E-invoice generation? How many vouchers changed after IRN generation? And how many invoices generated manually? The total information I'll be getting from this dashboard, right? And here I can see the IRN register. I can get the information regarding the transactions in details. Now, how we can update or generate the bulk E-invoices from Tally Prime. So there is an option called exchange on top menu, right? This menu called top menu. I need to click on the exchange button, exchange option. Once you are exchange, click on the exchange, the list of invoices will appear in front of you, right? So this is giving information regarding the transactions for which transaction invoices are pending. That means I have generated invoices, but I have not yet generated E-invoices from the IRP portal, right? Is there any doubt, sir? So there are total 4 transactions. Now I want to generate bulk E-invoices from Tally Prime. So how it will work now? You see, I need to select the transaction. Maybe out of 4, I am selecting 2 transactions and clicking on the send button. Once I am clicking on the send button, you see, for IRN generation 2. And do you want to continue? It will give you notification in every step. You will get the alert or notifications, right? So without taking your consent, without taking your consent, it will not send the data to IRP portal, right? So every time it will take your consent, the customer's consent. So I had total 4 transactions, but at present, I want to generate E-invoice for 2 transactions only. Maybe rest 2 transactions I can generate later on. Maybe I need to do some alteration with that invoices. So after finalization, I'll be generating the E-invoices for rest 2 invoices. And at present, I'm generating for this selected transaction. I'm sending the request to the IRP portal. So this is, so every time it will not ask, because I have already told you there is a time barrier of 6 hours. Once you have provided the credentials for next 6 hours, Tally Prime will not ask for the credential details, right? Then requests are sending to that progress box will come. You can understand through that progress box. So how many invoices have been generated? So this is the exchange summary, right? Immediately you will get the response from IRP portal and you will get an alert. That exchange summary is saying
invoice is generated for 2 invoices. Details are updated in the transaction. Please NK to continue. All right. Then we'll see the invoices. So here again, so process has completed. So invoice generated for 2 transactions. See. So total, this is the dashboard, and you can see the IRN generated details. So total IRN generated from invoice system 4. So this is the information, and how many rejected, how many changed after IRN generation, everything we will be getting here. Now enter on the generated invoices. You will get the list of invoices, and you can see the complete details of every transaction, that IRN number and supplier GST details, everything will be available here along with their GST number. Right, sir? So this is how you can generate bulk invoices. So is it simple or complex? Just I need feedback from your end. So we have seen 2 types of invoice generation: single, invoice by invoice, and bulk. At the day end, you can generate invoices. So just is it simple or complex? You can unmute and you can. Let's have some input from the CAs. I hope it is very simple. Thank you, sir. So this is very simple. That you don't need to provide, or you don't need to provide data in another app or another web portal. So there is no repeat work. The data what you are providing, that Tally Prime will capture the information, and Tally Prime will generate invoices for your clients. Right now, not only invoice. When you are generating an invoice, obviously that UA also you need to, or your clients need to generate. So do they need to provide the same information to UA portal or any or NIC portal? No. Only you need to provide the transportation history, transport history, dispatch history at the time of generating your invoice. Now we see from a single voucher how Tally Prime can generate e-invoice and EOA bill simultaneously, right? So this is Tally Prime, and you can see here invoice and EOA bill will be generating simultaneously through GST. See here, I am capturing a sales transaction. I am selecting the client party details or dispatch and supplementary details. In the supplementary box, I am providing quantity, rate, and at the time of generating the invoice, I need to provide the dispatch details like transporter ID, vehicle type, vehicle number, date, right? Everything. And if it is a consolidated UA bill, that also I need to provide here. The date of UA bill, everything. There is no repeat work, right? Kilometer and everything. Transporter for this transaction, mode of transportation, right? Vehicle number, and it's a regular or bill to, ship to, all information regarding to the EUA bill you need to provide. And before submitting the voucher, Prime will ask you one thing. Before sending the voucher, do you want to send voucher details for e-invoice and EUA bill generation? So previously, what we have seen? We have seen
how Tally Prime can generate e-invoice, and here we'll experience e-invoice and e-way bill will be generating simultaneously. So how it is working, we'll experience. See, you provide your credentials, then request will be going to the IRP portal. See, and here within a second, the through GSP, you will get a notification alert in Tally Prime, the invoice and EOA bill generated successfully, right? See, you can see the preview, or you can take the printout. This is your e-invoice, right? And now we see the EOA bill. This is my EOA bill with IRN number and EOA bill QR code. No extra effort you need to provide. Now you need to reaccess the transaction and provide the EOA bill number in the particular transaction, and system will capture everything once you be providing the acknowledgement number. All right. So this is how you can generate e-invoice and EOA bill simultaneously, right? Is it simple, easy? Any extra effort is required for this? I need inputs from everyone. Right. Now we'll see now how we can check the status of invoices. How many are generated? How many invoices are generated? How many invoices are cancelled? And how many invoices are rejected by the IRN via IRN register? Right. Now we see. Now generated IRN for pending invoices. Obviously, there will be some invoices which are pending to generate. Now we see update IRN for the invoices generated from other software source. Right? You might have some other software. From there also, I can generate IRN, right? And everything I need to perform through my Tally GSP. So how it is performed, we'll see now. Get complete IRN flow. So I need to go to menu, click on the go to menu, or you can access from the statutory report also. Now see, here I'll get the complete flow. There will be IRN register in the right button, right? And you can see how many invoices are rejected by the system. You will get the complete information. And if you want more details, you need to drill down. Then you need to press enter. Then how many vouchers change IRN after the generation? That is 23. And how many IRN updated manually? That is 1. And how many invoices got cancelled by the system? So total there are 5 invoices. The IRN got cancelled from e-invoice system. Mark as IRN cancelled. And if you want to get the complete information, you need to press enter for further drill down. And here also, you can also open e-invoice portal from the right button menu. Right? If you want to open e-invoice portal, or you want to get some information from e-invoice portal, right? There is an option in the right button, Control V. If you press Control V, you will get the e-invoice portal. Now we say the complete flow. Now I need to press enter for more details. I can get then I will get the complete details like GST number, type of transaction, right? So this particular transaction was updated manually from other software.
Now it is there. I'll provide the credential. I'll connect to the IRP. Then it will also be updated. Right? So this is one. You will get the complete transaction details or invoice details from this particular transaction, and you can get the invoice. So this is very simple, and you don't need to switch to any other app or any other portal for this information. Everything will be available in Tally Prime. Now we'll see the how to cancel the e-invoice, right? So that process is that you need to select the particular transaction, go to e-invoice, select the particular transaction, the detail. There are 2 invoices which was generated from e-invoice system, but out of 2, 1 invoice I need to cancel, right? So click on the update cancellation option. Click on the update cancellation. Then go to exchange. There is in the top menu, there is an option called exchange. So 1 invoice got cancelled, right? Then you need to connect to the IRP portal. Now Prime will say, see, IRN generated from invoice system 1 and IRN cancelled, marked as IRN cancelled. But I need to connect to this particular transaction. I need to share this information with IRP portal. So how it will happen? There is an option called exchange in the top menu. Click on exchange and mark as update cancellation and reason for cancellation. Maybe data entry mistake, and you provide your remark. Enter. It's very smooth. So click on the exchange button, send for invoice, right? Then click on the send button. You will get an alert. What alert? Hello. Hello. Yes, sir. Okay, Sujata, continue. Okay. Then you will get an alert. What alert? For IRN generation 0 and for IRN cancellation 1. So you can mark any transaction as cancelled, but that information need to be exchanged with IRP portal. So for everything, if you want to send some information or update some information about existing transaction, you need to click on exchange button from top menu, right? Then send invoicing system. And in every activity, in every function, you will get an alert. And without taking customers' consent, Tally Prime will not take any decision. Right? So here consent is very important. Now see. Now you need to provide your credentials for final updation. And exchange summary count is 1, e-invoice cancelled. Right? See, now this is the IRN summary. Total pending is cancelled is 1 and IRN generated from 1. And this is the information. So far, I have shown the single e-invoice generation, bulk e-invoice upload or single upload, cancellation, rejection. I have performed all the activities regarding e-invoices, but I have never left Tally Prime screen.
each and every activity can be smoothly performed from Tally Prime, right? You can also upload manual, or you can also get the flow of delete IRN, right? Including QR code and delete IRN. Everything can be performed. This is a very important thing. Now, there is an option there's an option called service in Tally Prime, right? Here, all these services need to be marked as okay, like browser request, remote access services, data sync, and e-invoice services. If these services are not ticked, then you won't be able to perform these e-invoice generation and e-invoice flow, right? I'm saying once again, these two services very important for e-invoice and UAB. These e-invoice system services, NIC, need to be marked, and e-invoice services need to be marked. These two services are need to be marked. This is very important. Without this service, you cannot perform e-invoice from Tally Prime. All right. So you will never need to go out of the product, right, for e-invoicing. So you are connected with invoice registration portal. You are connected with GST systems, and you are connected with NIC portal for UAB. And everything is happening. Everything will be possible once you are using Tally Prime and you have selected these two services. And at the time of registration, right? At the time of registration, you need to select Tally as a authentic GSP. Then only these things will be performed smoothly, right? Because for your customers, your clients will be start generating invoices from 1st April, right? If they are perfuming under this 20 crore threshold limit. So just inform your clients, please enable these two services and register Tally GSP as a GSP at the time of registration. I hope already you have done all these things for your clients. Now, I have gone through the e-invoice capability. My next topic will be Audit Trail. See, Audit Trail is a new thing. It is supposed to be implemented from 1st April 21, but this year, from 1st April 22, it is going to be implemented. And according to the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs, accounting software for maintaining books of accounts used by businesses that all under the purview of MCA should have an audit trail or edit log feature, the new software. So now we'll be talking about the Tally Prime edit log. This is very important. The product will ensure you fully compliant from day one without needing any change in the way you operate, right? And you need to do is upgrade to Tally Prime edit log. If you visit tallysolution.com and click on the download button, you see there are two exe files are available for edit log. One is release 2.1 and one is edit log, right? So you need to download both the exes if you want to perform edit log from Tally Prime, and you will get the flexibility to operate both Tally Prime and Tally Prime edit log as per your business requirement. Now we'll experience the audit log from release 2.1 onwards. Now we see the product, right? Live, we'll see. We'll experience. Can you see my Tally Prime edit log? Please confirm anyone. Yes, visible. Yes, sir. See, I have got two exe, Tally Prime 2.1 and Tally Prime edit log. I need to migrate the data from Tally Prime to edit log. So
we have a very limited time today. I am not going to migration process, right? So for migration and all this capability, my partner, Mr. Pankaj Kabra, will assist you, right? You may contact with Mr. Pankaj Kabra. He will be assisting for migration process. So I am not spending any more time for migration. Simply my my data got migrated, right? So there is a company called Venkateswara Traders. But how audit log will work? First of all, your Tally Prime must have a security control enablement and role-based authorization as per the user's authority that need to be enabled, right? So this is an existing feature in Tally Prime. Not Tally Prime, this is an existing feature since Tally 7.2 or 6.3. So you can create a number of security levels and admin must be there. So admin will be assigning the user's credentials, right? So what is the function of Audit Trail? Audit Trail will give you the information that after generating an invoice or transaction, how many times, at what time, at which date, by which user it has got altered or modified or deleted. So Tally audit log will give you the complete alteration information for your transactions and for your masters, accounting masters and inventory masters. All right. So let's go and experience the audit trail. Once you're clicking on the company from top menu button, you'll get this option, edit log. Sorry, just a moment. Just a moment. Just a moment. So why this error occurs has many reasons, like Tally edit log has its own limitation with respect to where you can open the company and where you can't. So we will take you further on this. Let him join once. My screen is visible, sir. Pankaj, can you please confirm? The screen is not visible. Not visible. No? Just one. Just one. Sorry. Please confirm if my screen is visible, sir. Yes, yes, visible. Right. So this is Tally Prime edit log. On the you can see here in the top left. This is Tally Prime edit log gold. Right. It can be silver. That is not the matter. That edit log exe must be there for generating edit log or capability. Now I need to migrate the data, which I was talking. Just I will for the small claims how to migrate. Right. So data I have already migrated. Right. So I didn't need to migrate. So data was migrated. This is my company, Venkateswara Traders. I'll provide my admin ID and password. So I can select it from my drive. The path I can select
from Tally Prime, and I have a folder called CA event. Now I can migrate. So data got migrated. My company name is Venkateswara Trainers. So first of all, I need to check the edit log regarding my level of securities, how many times I have migrated, how many times migrated by user A, user B, right? Maybe there are 2-3 users. So every time migration has been done from Tally Prime by user A, you can see at what time and which date, right? And this one, company data moves from Tally Prime. This is performed by an unknown user, because that time security level was not created, right? So every time it was migrated by a particular user. This complete information you will be getting, because you will be getting the data from your clients. After receiving the data, if there any mismatch, right, in data, you can check it. At what time, which date that data was migrated by which user. Which user means maybe there is an article clerk, maybe there is a senior clerk in your firm. So you can recognize it has done by the which user. That is the main purpose of data migration. Now we'll see the alteration history, how Tally Prime edit log will give you the alteration history, right? Let's go to the debug, right? Now here I'm in debug, and I am altering a particular transaction. Here date was 31st March. I am making the date from 31st March to 28th March, right? And transaction amount was 13,464. Instead of 13,464, I am making it 13,644, right? Right? I have done the alteration. Now here I need to enable the edit log. How can I enable? There is an option called Control O, or in the right button menu you can see option related reports. I am pressing Control O and enabling the edit log. The list of edit log reports will be coming now. You can here enter on the edit log, right? So that list of activity will appear. Just a moment. I'm making one more alteration. This particular in this particular transaction. Just a moment, sir. Just a moment.
I don't know how it is happening. Please provide, sir. Right. Sorry. I made some mistake. So this is the edit log summary for a particular master, right? So this particular master has been altered thrice, and this is the first record, second, third, fourth, fifth, and every time it has been altered by which user, that tally prime edit log will capture, and date and time, right? So this is previous records. So there was no gap, no difference, because it was this particular the first time this information has been captured for a particular ledger, right? Now after that, if we wanted to get the further details, see there is an option plus and minus. See version 1, version 2, version 3, version 4. I am just performing this particular thing in front of you. This was previous reports. There was no change. First time this information has been captured in tally prime. Next, press minus. You'll get the comparison between version 1 and version. In version 1, the ledger name was Alpha Provision, and in version 2, the ledger name has been changed from Alpha Provisions to Alpha Provisions Limited. And what about the version 3 and version 2? Version 3, we have again changed the company name from Alpha Provisions Limited to Alpha Provisions Private Limited. And in version 4, version 3 address was Orion Row. In the version 4, I have changed the address from Orion Row to Khidurpur. Right? So this is how, if it is, you will get the complete trail, and there is no limit. Is it good, sir? And if we want to go back, just press plus and minus, plus and minus. That's it. And you can see the activity. Altered by which user? Altered by which user? Right? So this is how you can change, you can capture all the alteration. Now I'm coming to a particular stock master. So I have an item 50-50 biscuits. Here I am changing the rate. Instead of 17, I'm making it 19. All right. Here, go to related reports, edit log. See, there is no previous record, and there is a version 1 and version 2. We can get the difference. In version 1, opening stock value was so and so. In the version 2, opening stock value got changed 8,500 to 9,500. Rate was 17. In the version 2, rate was changed 17 to 19. Right? This is how edit log will be supporting. And in case if you alter any transaction or voucher, so you can go to the sales register. Sorry.
I am altering one particular transaction, right? Instead of 1st March, I am making the transaction date say 2nd March. Just one moment, sir. 2nd March. I am also changing the delivery dates. I can also change. And what I am doing, I am changing the rates. 29 rupees. And changing 199 rupees from 200 rupees. Okay. Now here, you click on the related reports and get the edit log summary. You can get the GST tax analysis details, right? You can get the stock query details. If there anything changed, right? In edit log. And you can also get the details of alteration edit log. So this particular transaction got altered. So there is no previous records. Press minus to get the variance between version 1 and version 2. In the version 1, if I wanted to get more details, go to F12 configuration. See, you will get the details. So this is how you can capture or you can recognize this particular transaction was altered by whom, on in which date, by which user, at what time, right? So this is all about the edit log. Fine. So is there any question regarding edit log, or later on we'll have a question answering session? During question answering session, One thing, yes, there are one thing more. Suppose yes, if we make certain backdate entries, is this will work? Suppose I left one entry and I found cash voucher of 1,000 rupees for the month of April. I found it in the month of June. So whether I can make the entry of 30th April. Right, sir. I tell you, sir. Initial transaction date was March, right, sir? First transaction date was March. Transaction date is 30th April. April. Now, what you want exactly? Just can you please I want that whether when I make that such entry in the month of June, so whether edit log is activated only in the case of edit or the edit only, or in the case of addition also? No, edit log will perform only in the case of alteration or modification. So edit log has nothing to do with the backdate entry or any fresh entry. Backdate entry means it is a fresh entry, but only you are making the transaction in the backdate, but it is a fresh entry. So fresh entry will not come under this purview. You got my point, sir? Only addition in item, master, ledger master, or existing account and on existing transaction. Right, sir? If any entry is deleted, then also it will activate it. Yes, if any entry got deleted, that edit log will recognize it has altered by which user, on at what time, in which date. Even deleted transaction also can be recognized in Tally Prime edit log capability. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Now I am gone through the edit log. Now next topic will be I don't have much time. Another 2 more topics are left. Now we'll be talking about the digital signature. Now this digital signature, this my screen is visible. Pankaj ji, can you please confirm? Yes, it is visible. Right, sir.
Now, digital signature is not new in Tally, because why it is not new in Tally? At present moment, digital signature has been captured in default product in Tally Prime, but digital signature capability was added through third-party application, like through TDL. Our customization partners had given the facility in Tally, but from 2.1, it has been added as a default capability, right? Now, how digital signature will work? First of all, it's a dongle-based digital signature. Now, your existing any digital signature software, sir, obviously, it is a dongle-based. It is a dongle-based signature is a type of electronic signature, right? And authenticated. And this signature are created based on the public key infrastructure. Unlike image-based signature, this can be modified, right? These certificates are safely stored in a physical dongle, right? It is a certificate kind of thing, and these are generally used in the market as it provides authenticity and integrity to the certificate. I hope already you are dealing with this particular dongle and digital signatures capability. I don't want to talk much because you are master of this particular subject. So I just wanted to show the capability, right? How it will work. And just a moment, sir. There is a, please be online, sir. Sorry. So how digital signature will work in default tab? Now I show where from you need to configure or enable the digital signature feature. That is very important. See, what about the transactions you are doing in Tally Prime? Select any sales transaction, right? Like this particular transaction. Now you wanted to add digital signature for this one. So you need to click on the export button, then current. After that, you need to provide the path, this one, and file format. This is very important. This is very important. You select the path and select the authorized certified provider signature provider name. So where from this data is coming? This is coming from your dongle. Now, once this dongle is attached with your system where Tally Prime is loaded, you will get this information, right? And you need to select the file. Which file format you are preferring? For invoice generation, you may select the PDF. For emailing, you may select the text and image. There are various types of file formats. See how simply you can generate. Then this, you need to provide the PIN. This is not coming from Tally. This particular dialog box is coming from your dongle. And in dongle, there is a path PIN. There's a PIN was generated at the time of enable the dongle. You need to provide the dongle, right? You need to provide the dongle PIN. See, this is your invoice. It is coming along with the authorized digital signature. Now, if you want to add something like, if you want to add some logo, that was what we will do. You can also capture logo, and you need to specify the path, Tally logo. See, now your invoice is coming with digital signature and your logo. And this is very simple. And this the selection of this path and this file format, this is just once in a lifetime effort. आपको रोज नहीं करना है, right? आपको रोज नहीं करना है. It is once in a lifetime effort. Once it is set in Tally,
every time whenever you will generate the invoice along with your digital signature and logo, it will capture the data from the system as per your defined path. So this is very simple. Suppose if you wanted to send mail to your customer along with logo and digital signature, this is how. From here you can select the mail version, select the particular email ID, and you can send it to your customer. So this is very simple. Yes, sir. For data signature, what are the what our system is updated? What are the which you have to update it in the Tally Prime? In the Tally Prime, right? In the Tally Prime, that you need to have the latest release, which is available in our website. Old release or previous versions like ERP9 or Tally Prime below release 2.1 will not support digital signature. Right, sir? And which version will release 2.1, the present version which I am showing. Tally के सारे features आपको enjoy करने हैं. You must stay on the latest version. You must keep your TSS updated, and you are eligible to get the latest version that is released on Tally. Right. पुराने में भी तो था ना ये? ना, पुराने में नहीं था सर. पुराने में बता रहा हूँ आपको. पुराने में नहीं था. पुराने में जो भी था एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था. It was not a default feature or capability of Tally Prime. Okay, right? now it is a default feature. Now it is a default feature in Tally Prime. If you if you have a valid TSS and if you upgrade to Tally Release 2.1, you will get this benefit. Right, sir? Can I move to the next topic? Let us move up to the next topic. We have yes, right, sir. Let's left. Because we have to finish within 15 minutes, 15-20. Requirement that we have is like we have to stay on the latest version. Right. Now this is the last topic. We'll be talking about the AWS. AWS, it is a connected services, right, sir? So since release Tally 6.3, since release 6.3, we are on connected services. And our first connected service name was data synchronization. It's a very old feature. Then in ERP9 Series A, we have given remote access facility. And in release 6.6, we have given Tally report in browser, right? So you can browse your reports. Then we have introduced Tally TView, right? Tally virtual utility in the year of 2020. And in the Prime Release 2.0, we have introduced Tally Prime powered by AWS. AWS is basically a cloud server, right? And this cloud server is owned by Amazon. Now, why Amazon server? Because there are many players in the market. Those are selling cloud facility, cloud storage facility, right? Why AWS? Because AWS is the most tightest and secured cloud service provider. It has got 5 layers of security, right? An option to manage distributed operations on. You may access it from basically it is a virtual machine basis. So you can access it from anywhere, right? It is reliable and you can get everything you need in one place. It is flexible. It is processor agnostic and it is economical also, because when you're paying the same price for a better cloud service, obviously customers will be, your clients will be moving to Amazon AWS cloud server, because it is same price you will getting the better service, secure service, right? So it is a private virtual machine with computers for each customer. It's a VM based. It is easy to movement from on-premises to online, right? It is secured access computer using Tally.NET authentication and secure PIN. The way you are accessing your remote access control like through .NET.
The same way you can access Tally Prime AWS. It is high availability on AWS infrastructure. So there is no question about the infrastructure since Amazon is managing it, and it is flexible, backup space, auto backup of customers' data. Here, just one thing just I wanted to tell you that Tally, what is the Tally's role in AWS? Tally is just facilitating the project for customers, and it can manage computer and users from a simple web portal. So some question might arise, if there enough infra space for all my stuff, is the access to virtual system secured? How do I ensure my infra resources taken in a neither overutilized or underutilized? Is my data getting backed regularly? Will my team get the proper technical support? Will the onboarding process to the virtual system be smooth? These questions may arise in your mind. So there is the answer. This is AWS services or server, and you are here, and you have got multiple locations, right? And there is a web services for AWS. So everywhere, from everywhere, you can access these services, and it is secured. Now, what about the infra? So it supports Windows 7 SP1 or above OS, Microsoft .NET 4.6.2, and Virtual C++. And if you talk about the this thing, web services, so at present Linux based, basically it is a Linux based. So these are the infra requirement for AWS, and this is very common. And this is a virtual computer connection. The way you are access your Tally Prime through your .NET location, .NET connection, the same way you need to provide your PIN and along with your .NET ID password, right? And there is a nice DCP client. This nice DCP given the AWS of high performance remote display protocol RDP that allows user to receive remote desktops and applications streaming from cloud virtual machine to their devices in a secured way. It's a very secure because nice DCP is giving AWS very high capability. Now this is how you need to access. Like you need to provide your .NET ID, your .NET password, right? Existing .NET ID and password, and secure PIN for AWS. Then click on the login. It is very simple. Once you are providing all this PIN and credential, then you will get list of users list. From here, which one you want to access, click on that. Click on connect button, and you will get your desktop. Tally Prime is there, right? You will also get data backup storage for auto backup and other things. And click on the Tally Prime logo. Tally Prime will work. Now this is a self-service portal for computer and user management. So restart, shut down, manage users, update Tally Prime, manage backup, everything will be handled by the AWS server. And you can manage it individually, and you will get the notification every time that login start and time. In every day, the first user login to the virtual computer will start virtual machine, right? It will take approximately 5 minutes. The first one, the first user. For rest users, it will access immediately. It will connect immediately. The next set of users will be able to log in their respective sets of computers immediately. Only for the first user will take 5 minutes for login. Shutdown time, the computer shutdown will be scheduled. Shutdown for all customers at 9 p.m. At present, AWS is giving 12 hours services, 9 a.m. to 9 p.m. right? Users will be notified about the shutdown 15 minutes before. That means at 8:45 p.m. you will get the notification for shutdown. And after shutdown, user can log into computer by sharing. So it will take another 5 minutes, like normal login, first login, right? And this is the time schedule. 9 p.m. you will at 8:45 p.m. you will get a notification for shutdown, and at 12:30 a.m. notification from 12:15 p.m. 15 minutes prior. Okay.
This is the shutdown time and this is the login and startup time. You will get a notification like that at 8:45 p.m. Right? What are the prerequisites to use these solutions? Number one, Tally Prime release 2.0 or higher are supported. Right? This is number one criteria. Next, 1 to 30 users per machine pack, ranging from 4 to 32 GB RAM are supported in this environment. Customization, if you're having any existing customization like TDL, TCP, that will be supported. Third-party DLLs and EXCs are not supported in this environment. What about the remote access of prerequisites? Microsoft Net version .4.6.2 and virtual VCs plus 2015 to 2019 are prerequisites, right? Mac, at present, Mac is not supporting. What about the browser access? Windows Chrome. Mac is under testing. Linux is also under testing, right? What sort of support will be given? Because Tally is having, we are having our own support cell for AWS, right? Our customers, our partners, Balaji Invoices, they are having a dedicated support guy for AWS services. So your first point contact will be our partner, certified partner. So there is a dedicated person is there, he's sitting for your call. And if he's unable to serve your purpose, then Tally Solutions having their own sale for AWS customers, right? And Elcom is also there. Elcom is a distributor, national distributor for AWS. So Elcom is also having their support cell. They'll access your system and they'll start the services, right? So these are the solution IDs. So these information will be provided by our certified partner, Balaji Invoices. Right? For support and feedback, you can contact these IDs. Now come to the plan. This is the plan for 12 hours, 1 VM. These are the requirements. Machine requirement. These are code usage hours. Total usage days. Right? 26 days. Sunday is not there. Sunday is excluded. But if you wanted to access Sundays, that is also possible. So for that, we have a different commercial. Even after 9 p.m., if you want to access AWS, you can access. So for that, we have a separate commercial, right? This is for the 1 VM. This is the requirement for 2 VM. This is the requirement for 4 VM. Can you see at present, we are having services for 1 VM, 2 VM, 4 VM, 8 VM, 12 VM, and 16 VM. And these are the requirements as per the number of VM packs, right? So till 2 VM RAM requirement is 4. For 4 VM RAM requirement is 8. For 8 and 12 VM RAM requirement is 16. And these are the data volumes, as you can see, and these are the backup volume for. Obviously, more numbers of VM will be increased. Data backup volume also will increase. Data volume also increase. Root volume is also increased accordingly, right? This is for Tally Prime server. These are the requirements for Tally Prime server. So we have 12 hours pack for 3 months, 6 months, and 12 months. These are the 3 tenures we are having at present for Tally Prime server and Tally, right? Now, I come to the question answering, and this is the, let's introduce to our partner, Balaji Invoices. Balaji Invoices is the certified partner. And these are the details, the contact details and email ID website for Balaji Invoices. Right. So I am through with my presentation. Thank you, Sujata. So we can quickly take a few questions if anyone having any questions in the house. Majorly we have covered all the 4 sections. Vikashji, do we have time to open the house for QA? Yes, we can take
4, 5 questions. If anyone have any questions, they can unmute themselves and ask the question. AWS we have taken in a very quick session, but ultimately I would like to tell you that this is a service provided in a collaboration with Amazon. It is safe and secure. You can choose the plans available like single user, multiple users as per your clients or your requirement. It can be accessed from browser based also. So yes, we have something. Whether any filter or range is there in edit log to identify any particular type of change. Yes, Sujata, you can take up on this. Sujata? Yes, sir. Yes, sir. Just let me read the question. Whether any filter range in edit log to identify any particular type of change. Yes, sir. That will be there. See, I think have you noticed that I was pressing a button called F12 configuration? From F12 configuration button, you can change instead of seeing all the details, all the data. You can select. You can enable. You can, if you press the option, only altered data will be available in front of you. Thank you, Sujata. Anyone else? For every virtual type internally, is it possible to have one more subset serious or auto or manual? Yes, we can create multiple voucher types also. If you Yes, we can create multiple voucher type. You can create multiple voucher types and you can create multiple sequence number. That way you can do it. It is available in the voucher types you can create. In the sales, you can create 2, 3 other type of voucher types. Okay, you can maintain that. So yes. Yeah, one more thing, Sujay ji, is there any system in the Tally so that we can enter the purchase bill through E-Invoice of our seller automatically? No, sir. No, we sir. have to do it manually only. Yes, sir. At present, that functionality is not here. At present, no. Data you need to capture manually, sir. Purchase data, purchase information, you need to capture manually. You'll get the information from QR code after your upload, right, sir? Then there's not any system that if we press the QR code or something like that, no, sir. No, can in the system so that purchase detail or all come directly. Sir, at present it is not there. It is in your roadmap. Okay, I cannot say exactly when it will be available in your roadmap, but at present it is not. But it is in your roadmap. It is in your roadmap, but when it will be available, I don't have any specific this thing. Okay, because it will come in my 2A or 2B, but for the purchase purpose, we have to make manual entry, na? Right, sir. You into the data manual. जी शायद फ्यूचर में रोडमैप में है तो एक्सपेक्टेडली अगले कुछ रिलीजेस में हो सकता है आ जाए, बट नो वन कैन से कि किस रिलीज में ये इंक्लूड होगा. तो पीपल आर वर्किंग राइट सर वर्किंग ऑन मैक कंपैटिबिलिटी, लिनक्स कंपैटिबिलिटी, ये भी पाइपलाइन में है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी कितनी जल्दी तक ये फीचर्स आ जाते हैं. एंड फर्दर टू श्रीकांत जी, नॉट विदाउट क्रिएटिंग अनदर टाइप, if you make it a manual process, तो definitely कहीं ना कहीं mismatch होगा and it will be a chaos for any of the user. So we would not suggest, but if you can manage, it's your call. अगर आप manually उसको कर सकते हैं, sequence type manage करना, आप कर सकते हैं. Otherwise it will be tough. Because if your seller is uploading wrong information, right? And if you capture that wrong information in your purchase register, so you cannot match, right? So it will remain wrong. How will you upload? He is generating E-Invoice now, so he will also provide me the manual E-Invoice only. So if I will make the physical entry, then the same entry will be done, na? Then there is no question of wrong invoice. You got my point? No,
I got the point. I got the Hello. point. If he's if he's providing, yes, if your seller is providing wrong information, but I believe in every organization, before entering purchase data, they cross-check, they verify whether the information is correct or not, GST and in data is correct or not, rates and values are correct or not. So I believe everyone check before putting. That I agree with you that checking is required. Okay. Any more question? Any more questions? I believe so. Could not get you, Srikanji. He's telling about the import of purchase bill. Actually, Acha. separate set of accounts, separate item. Synchronized with seller. Okay. I think there is no more question, Pankaj ji and Sujay ji. At this point, I would just like to thank all the CAs for giving us the privilege to have a round of interaction with you. It was a privilege, and we will be more than happy to serve you regarding Tally. Any of your requirement, it might be a single user, multi-user, it might be a server edition, it might be an AWS, it might be having any problem in your existing Tally. Hardly matters you have taken Tally from whom, but even if you need any support, any services, do get in touch with us. Our number is displayed, and thank you very much. Thank you all the CAs. Now I request our Secretary CA Rahul Rungta ji to offer a vote of thanks to Pankaj Kabra ji and his Tally team. Thank you, Vikas ji. Thank you, Vikas ji. Thank you, Pankaj ji, and thank you, Sujay ji, for showing us the various features which are available for in Tally, e-invoicing, all the facilities that you're providing. I think it will be beneficial for all of us since we are already using Tally. So thank you again. And on behalf of the association, I would also like to thank all the attendees today. 55 who are currently present and all those who were there earlier and have left. So thank you guys for taking time out on Sunday morning and joining us for the seminar and making this a grand success. Thank you. And stay safe, stay healthy. Thank you.